Good evening, students. Welcome back to the online revision class. We have done already in the afternoon session 2 units. Now let's move to the third unit. We have already done with, let me see the syllabus. We have done with the introduction, globalization, and all introduction part we have done. We have done cross-border investment relations. Now in the third unit, that is all about your cash management, international cash management, international inventory management, international receivable management, capital structure, cost of capital, determinants. So let's, in a brief way, let's start quickly. 2.5 hours, we have to cover 3 units. So let's talk about that. Before that, let me enter the people. Yes. Okay. Cash management, you all know that that is not so much relevance for you in the fourth semester. You obviously know what you understand by cash and what is the importance of cash. Obviously, we are doing international financial management, so obviously it involves your cash management and that involves your cash planning, how you are preparing a cash budget or daily, weekly cash budgets, and how you are implementing your budgeting strategies. These are also coming into your purview of cash management, right? So when we are talking about multinational enterprises or we are talking about international businesses, there is also the comes the importance and relevance of cash management. Without that, obviously, we cannot move forward with the finances, right? So the principles of cash management in domestic firms as well as in MNCs are same, almost same. But the point is that it is a much complex when we are talking about international cash management, right? So, so what kind of complexities you can face, just like we have seen in the previous 2 units, that is a basis of your international financial management, that there are various kinds of risks related to your fluctuations, your currency rate fluctuations, your exchange rate fluctuations, currency convertibility, right? So these kind of fluctuations all over are included towards your cash management, right? So an MNC collects cash from various sources across the countries and makes payments to its subsidiaries operating in different countries. So the MNCs transfer funds through international transfer pricing. They have to give the payments to their employees. They have to invest in different countries. So it involves a very large amount of cash management, in the sense they have to check, they have to even take the advantages of the treaties, like is there any avoidance of double taxation treaties. So I guess you are aware of this double taxation treaties, right? Let me join some more people. Okay, coming back to the our international cash management. So what we are saying कि वही सिंपल चीजें हैं, जैसे हम नेशनल नॉर्मल डोमेस्टिक कैश मैनेजमेंट करते हैं वैसे ही हमें करना है, बस थोड़ा सा एक कॉम्प्लिसिटी इंक्रीज हो जाता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं क्योंकि हमें पेमेंट्स करने हैं, डिफरेंट पैरेंट पेमेंट मिलना है, ट्रांसफर फंड्स मिल रहा है फ्रॉम पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी एट डिफरेंट कंट्री, हमारे डिफरेंट मल्टीपल सब्सिडीज हो सकते हैं. So foreign exchange rate fluctuations can have a great impact on the cash management. Secondly, while we are doing this international cash management, हमें क्या याद रखना है कि we have to take advantage of different treaties. Like there are avoidance of double taxation treaties that governments might have entered into. So you should aware of, तभी आप अपने taxes बचा सकते हो, तो tax बचा पा रहे हो, तो ultimately आप cash management कर पा रहे हो, right? इसके अलावा आपको देखना है कि आप कहाँ से किस country में investment opportunities ज्यादा है, कहाँ पर आपको return yield ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पर आपको virtually pooled you can get, your centralized authority can and able to manage. So you have to you have to keep a constant watch over all your cash balances and its subsidiary units. And you should know how your funds are moving from subsidiaries to the parent company and parent company to the subsidiary. So you have to make sure that is there adequate liquidity in the liquidity of the funds, or it is an excess liquidity, or
what kind of cash management you want and how much balance of cash is there, minimum cash balance आपका क्या है, that you have to maintain. So efficiency of cash management. So how you can maintain efficiency, obviously by following the steps like how you are collecting your payments, how your disbursement policies, what kind of competitive environment you are in. So how much cash reserves you are keeping, what kind of substantial savings or additional income of the company are dealing with. So these kind of things you have to keep in mind while doing the efficiency of cash management, right? Then we have a concept of float. What is that float? An MNC operating globally may have to maintain hundreds of bank accounts. You are also know, you are well aware that and accounts may not show the balances that shown by corresponding book of the MNC. In other words, the MNC cash book balance may differ from the bank passbook. हम 11th-12th में accounts में bank reconciliation करते थे, right? So अभी तो that is physically हो गया है, physically बोलो technological through हो गया, phone के laptops के through, Excel के through bank reconciliation कर सकते हैं, but मैनुअली पहले हम करते थे कि कैसे किया जाता है, बैंक पासबुक में डिफरेंस हो सकता है, कैश बुक में डिफरेंस हो सकता है. सो उस डिफरेंस को हम जब इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के टर्म्स में बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लोट. सो फ्लोट इज बेसिकली द मनी अराइजिंग फ्रॉम डिले इन पेमेंट ऑफ चेक इश्यूड बाय द फर्म और द डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक्स इश्यूड बाय अदर्स इन फेवर ऑफ द फर्म. सो अगर कैश बुक बैलेंस और बैंक बुक पासबुक में डिफरेंस जो आता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं फ्लोट. ठीक है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन करने को और कुछ लगता नहीं है मुझे. आगे चलते हैं. अगर सपोज मेल there can be different sources of delay or floats. A check issued by firm may take some time to reach the pay, so this delay is called mail float. Second क्या हो सकता है, जब pay of the check may take some time to process the check internally and deposit it in the bank, तो इस delay को हम बोलते हैं processing float. Third type of float क्या हो सकता है, जब some amount of time is also consumed in clearing the check through the banking system, तो इस टाइप के हम इस टाइप के फ्लोट को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग. तो फ्लोट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. क्या क्या होता है, तो पहला वन हमारा is mail float. First one is mail float, second one is your processing float, and the third one is your clearing float. ठीक है, तो ये 3 टाइप की फ्लोट होते हैं. तो delays in transit is your mail float, processing is your processing float, and the clearing of checks causes a float which is also known as your clearing float. ठीक है, so ये 3 टाइप्स के फ्लोट आपके पास है. Then we have cash collection. आपको किस तरीके से cash collection करना है, तो there can be a term called lock boxes. So what is lock boxes? So the lock box system is one of the oldest and most widely used system of cash collection. Okay, and MNC may establish lock boxes in different places around the world or rent a post box and authorize its local banks to pick up at the contents in the box. So क्या होता था, जैसे post offices, I'm not sure that you have seen or not कि पहले क्या होता था, जैसे लेटर बॉक्सेस टाइप ऑफ होते थे, तो वो लेटर बॉक्सेस में लोग चिट्ठियां आकर डालते थे. तो सिमिलरली ये लॉक बॉक्सेस भी होते थे जहां पर आप कैश अपने चेक्स या डिमांड ड्राफ्ट्स उसको आप उसमें पुट कर सकते थे. ठीक है, तो डिफरेंट एमएनसीज अपने डिफरेंट सब्सिडीज के पास या डिफरेंट कंट्रीज में ये लॉक बॉक्सेस रखती थी जहां पर कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेल देयर रेमिटेंसेस टू द लॉक बॉक्सेस. ठीक है, द लोकल बैंक ओपन्स द लॉक बॉक्सेस वन और मोर times daily, collects the check and process them for clearance. ठीक है, जैसे सिटी बैंक करता था. सिटी बैंक आज से 5-6 years पहले भी मैंने अभी ऐसा है कि नहीं सिस्टम आई डोंट नो, लेकिन अराउंड 5 years पहले तो ऐसा सिस्टम था कि लॉक बॉक्सेस वर देयर इंस्टॉल्ड. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वो लॉक बॉक्सेस थे सिटी बैंक के. तो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, एट द एंड आपको चेक उसके पेमेंट करना पड़ेगा, तो चेक्स आपने इशू किया और उस लॉक बॉक्सेस में डाल दिया आपने. तो बैंक्स उस लॉक बॉक्सेस से निकालती थी और अपने चेक डिस्पोज करती थी टू द सिटी बैंक. ठीक है, तो इस तरीके से लॉक बॉक्सेस होते थे. तो एमएनसीज भी ये सब करती थी, एमएनसीज भी अपने लॉक बॉक्सेस रखती थी और कस्टमर्स उसमें पुट करते थे. ठीक है, और जब क्लियरेंस हो जाता तो कंपनी को पता चल जाता है कि कस्टमर ने पे कर दिया. ठीक है, ओके. Let's move ahead. Cash collection ये हो गया. लॉक बॉक्सेस क्या होता है, we have understood.
Now coming to the next type, next point which you can inculcate in the this cash management, international cash management, is your cash disbursement. Okay, what is this cash disbursement? It is the basically how you are accelerating the cash collections and slow down your means how you're disposing, how you are providing the cash to your employees, how you're disposing that to the other बैंक अकाउंट्स जहां आपको आपको पैसा पहुंचाना है उसको किस तरीके से आप डिस्पर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो कैश मैनेजमेंट ये दो चीज के बीच में ही एक्सेलरेट करती है, बेसिकली आप किस तरीके से कैश कलेक्ट कर रहे हो और किस तरीके से कैश आप डिस्पर्स कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन फास्ट होगा, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन अ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट कलेक्शन एंड स्लो डिस्बर्समेंट्स will result in maximum availability of cash to the organization. But ये इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आपके और कस्टमर्स के रिलेशंस या आपके और आपके सप्लायर्स के रिलेशंस में कोई बाधा ना आए, ठीक है। आप कलेक्ट तो बहुत जल्दी कर दे रहे हैं लेकिन डिस्पर्स उनको पैसे देने में आप बहुत लेट कर रहे हो, तो दिस विल बी कॉज अ मच डिससैटिस्फैक्शन अमंग योर कस्टमर्स, राइट, नॉट सप्लायर्स. So for this, the firm need to study its customers and suppliers to spread across countries. The disbursement float represents a negative balance in the records of MNC as against a positive balance at the bank. That is, the disbursement float arises when checks issued by the MNC have not been debited to the bank account on which they are drawn. So disbursement float क्या होता है? अभी हमने तीन टाइप की फ्लोट्स पढ़े, इसके बाद एक और टाइप की फ्लोट पढ़ सकते हैं, that is disbursement float. What is disbursement float? वो उस टाइप अराइज होगा जब आपके एमएनसी ने इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ है, ठीक है। So this can be utilized by the MNC to its advantage. Though proper estimation of disbursement float, the MNCs can minimize cash balances with bank, which ultimately results in effective utilization of cash. तो आप किस तरीके से एक बैलेंस बना रहे हो, that is आपका फास्ट कलेक्शन हो रहा है एंड स्लो डिस्बर्समेंट्स हो रहा है, जिससे कि आप मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रख पा रहे हो, जिससे आप इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट को और एक्सेलरेट कर सकते हो, ठीक है। Disbursement control can yield substantial results from an MNC. There are different ways of controlling disbursements such as zero balance accounts, electronic fund transfers. तो इस तरीके से भी आप डिस्पर्स कर सकते हो, जैसे nowadays what we are doing, हम किस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से कर रहे हैं। There are also zero balance accounts. So zero balance accounts क्या होता है? ये एक arrangement होता है with a bank that allows the firm to write checks against the bank account containing zero balance. Suppose मेरा zero balance है, फिर भी मैंने एक agreement करके रखा है मेरे बैंक से, which is known as zero balance account, जो एक arrangement है कि अगर zero भी balance है तभी मैं किसी को चेक कट करके दे सकती हूँ कि 5,000 रुपीज आप मेरे बैंक अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हो, तो 5,000 नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा एंड देन आई विल पे इंटरेस्ट और व्हाटएवर फीस, lump sum fees for that. So that is a zero balance account. So इस टाइप के अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये सब होते हैं फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ योर कैश. So zero balance account रखना भी बहुत important है because it eliminates the need to estimate and maintain the cash balance of each disbursement account. So आपको ये चिंता नहीं होगा, या इसको आपको बहुत इस पे ज्यादा मैन पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपके नॉलेज यूज करने की जरूरत नहीं है कि आपको एक डिस्बर्समेंट अकाउंट कितना रखना चाहिए, कितना कैलकुलेट करना चाहिए, मैं हर रिसीवेबल्स को कैलकुलेट कर रही हूँ, हर कस्टमर्स के कितने कस्टमर्स को मुझे पे, कितने सप्लायर्स को मुझे पे करना है, कब करना है, कितने कस्टमर से मुझे कलेक्शन करना है, इस सब का सिस्टम ना रखकर यू कैन हैव अ जीरो बैलेंस अकाउंट, जिससे कि यू आर एलिमिनेटिंग द नीड टू मेंटेन द कैश बैलेंस ऑन ईच डिस्बर्समेंट अकाउंट. सो दिस काइंड ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट आर देयर फॉर द सब्सिडियरी अकाउंट्स, ठीक है, जहां पर मास्टर और पेरेंट कंपनी डिस्पोज देयर amounts cash. Then also we have your SWIFT, that is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. मॉर्निंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था स्विफ्ट के बारे में, so not explaining again. Then moving to netting, that is international netting. International netting क्या होता है? बेसिकली ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है बिटवीन इंटरफर्म ट्रांजैक्शंस के बीच में, कि सपोज मेरा नेगेटिव 40 रुपीज बैलेंस है और दूसरा फर्म है उसका सेम, हमें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एंड उसका 60 रुपीज बैलेंस है, तो मैं 40 रुपीज उसको दूंगी एंड देन वो मुझे 60 रुपीज देगा. इस तरह से ना करके हम बैलेंस आउट करके 20 रुपीज का हम ट्रांजैक्शन करें, ठीक है. व्हाट आई हैव सेड अगेन, आई एम सेइंग नेटिंग इज अ, you can say arrangement between two companies or two or more companies जहां interfirm transactions होता है between subsidiary units और between subsidiary units and parent firm. क्या हो सकता है कि दोनों की जो करेंसीज में है
किसको कितना बोरो करना है, किसको कितना देना है, उसके बीच में जो बैलेंस है उसको बैलेंसिंग आउट करके, ना कि वो पूरा अमाउंट उसको ट्रांसफर करें और वो रिमेनिंग अमाउंट उसको ट्रांसफर करें, ना करके हम बैलेंसिंग करके उसको हम नेटिंग बोलेंगे, ठीक है। An MNC that has affiliates spread over many countries may find that some of its subsidiaries have surplus amounts of currency, while other subsidiaries may need to borrow amounts in same currencies. ठीक है, तो MNC ये देख सकती है कि मेरे पास सब्सिडरी A है, सब्सिडरी B है, सब्सिडरी C है। सब्सिडरी A के पास सरप्लस में $10,000 है और सब्सिडरी B को $12,000 चाहिए, तो वो $12,000 बैंक से ना लेकर $10,000 वो सब्सिडरी A से ले सकता है। So this is a netting, right? So similarly, one subsidiary may be hedging a long position in one currency, while another subsidiary may hedging a short position in the same currency and with the same maturity. There are large number of interfirm transactions between subsidiary units and between subsidiary units and parent. If such transactions are settled on a bilateral basis, a large number of currency conversions would take place with substantial transaction costs. So अभी अगर bilateral basis पर होता जाएगी एक का दूसरे का दूसरे का तीसरे का, तो फिर बहुत transactions हो जाएंगे and obviously हर एक transaction cost के साथ एक additional cost attached है, right? हर एक transaction के साथ उसका transaction cost attached है, तो उसको reduce करने के लिए, उसको mitigate करने के लिए the subsidiaries used or the parent company and subsidiary used this concept known as netting. ठीक है, so the payment of the method of payments netting is handy in this regard. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एमएनसी है जिसका हेडक्वार्टर यूके में है और उसकी 3 सब्सिडियरीज है, कहाँ कहाँ है, कनाडा, जापान एंड यूएस में, ठीक है। सो ये टेबल आपको बताता है कि उसके एक कंपनी एक एमएनसी है जो कि यूके में है, उसके कनाडा में है, जापान में है, यूएस में है, ठीक है। उसकी रिसीट्स कनाडा में 20 है, रिसीट्स फ्रॉम जापान 30 है, रिसीट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स 40 है। कनाडा में डिस्पर्समेंट 30 करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, ये तो सीखा है। कनाडा से जापान को डिस्पर्स करना है 40 एंड कनाडा से यूएस को डिस्पर्स करना है 20। देन जापान का डिस्पर्समेंट 40 टू यूके, जापान डिस्पर्स 30 टू कनाडा, जापान डिस्पर्स 45 टू यूएस, सिमिलरली यूएस का बाकी 3 स्टेट्स के साथ। तो ये एक नेटिंग कंसेप्ट है इंटर एफिलिएट ट्रांजैक्शन की, वो आपस में नेटिंग करके कि किसको कितना देना है, मैं आपस में अपनी करेंसी की यूके का पाउंड में कैनेडियन डॉलर्स में चेंज कर दिया, येन में चेंज कर दिया, डॉलर्स में चेंज कर दिया, इतना सारे चेंजेस ना करके, या एक कंट्री एक कंपनी एक सब्सिडरी तो दूसरे कंट्री में है, वो सारी कंट्री की करेंसीज अपने सब्सिडरीज को प्रोवाइड करे। इससे बेटर ये नहीं है कि हम आपस में इनकी ट्रांजैक्शंस को मिटिगेट करके हम सेंड कर दे रहे हैं। सो दिस इज अ इंटर एफिलिएट ट्रांजैक्शन दैट इज बीइंग डन हियर, ठीक है। Okay, let's move ahead. Now there is a system known as a centralized cash management. So an MNC with multiple affiliates across various countries has 2 alternatives for cash management. क्या alternatives है? First alternative ये है कि leave the cash management to individual subsidiaries. कि मेरे 10 subsidiaries है, मैंने 10 subsidiaries को ये responsibility दे दिया कि आप अपने cash management खुद करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, सेकंड ऑल्टरनेटिव, when the cash management is left to the affiliates, each subsidiary has an entire responsibility of cash management including short term investment, short term borrowing, exposure etc, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। और दूसरा सिस्टम क्या है, दूसरा सिस्टम इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। एक हो गया डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट और एक हो गया सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट वो कैश मैनेजमेंट है जहां आप अपने सब्सिडरीज को उन पर छोड़ दे रहे हो कि आप अपने कैश मैनेजमेंट खुद करेंगे, which includes your short term investments, short term borrowing and currency exposure management। तो आप खुद कीजिए, that is your decentralized cash management। एक और है alternative, that is your centralized cash management system। centralized cash management system में क्या है कि एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल एमएनसी पैरेंट कंपनी है, वो एक सेंट्रलाइज्ड कैश डिपॉजिटरी बनाया है उसने। इट एक्ट्स एज अ नेटिंग सेंटर, वो एक नेटिंग सेंटर की तरह काम करता है और एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है फॉर ऑल द सरप्लस फंड्स ऑफ अ सब्सिडरी यूनिट।
जितने भी सरप्लस फंड है 10 सब्सिडीज है, सबकी सरप्लस फंड्स वो इस यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और यहाँ से जिसको बोरिंग चाहिए वो वापस दूसरे सब्सिडीज को प्रोवाइड करेगा. सो देख the centralized cash management, in centralized cash management the parent company act as a netting center as well as repository of all surplus funds of a subsidiary unit. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली इसका एडवांटेज ये है कि आप एज अ पेरेंट कंपनी आपको ये पता चल रहा है कि कितना आप कौन सी सब्सिडी का क्या कैश मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है. आप एक affiliation of pooling system create कर पा रहे हैं. ठीक है. So that it can be an advantage. Further, cash deficits can also be taken care of effectively by undertaking market borrowings at most favorable rates. Apart from that, you can have an adequate liquidity in the system with some smaller cash holdings as compared to decentralized cash management system. So there are many advantages of cash management, centralized cash management system. So in this international cash management, what you have to understand the terms which are there. You have to explain those terms. What are those terms? They are coming under efficiency cash management. Then we have float 3 types के होते हैं. Then cash collection, cash disbursement. कैश कलेक्शन फास्ट होना चाहिए, कैश डिस्बर्समेंट स्लो होना चाहिए. देन नेटिंग क्या होता है, किस तरीके से बाय यूजिंग इंटर एफिलिएटेड फंड फ्लो ट्रांजैक्शन द एमएनसी कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो नेटिंग इज हैंडी इन दैट रिगार्ड. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेटिंग, हाउ वी कैन ड्रॉ दैट. ठीक है. सो दिस इज यू कैन include in the international cash management. Apart from that, what you can include, that centralized cash management system and decentralized cash management system. ठीक है. I guess that is clear to all of you, right? अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिसीवेबल मैनेजमेंट. What is international receivable management? First, you should have to understand the receivables. What are the receivables and how we can manage that receivables in multinational corporations. Normally, जैसे हम अपने receivables को manage करते हैं, which involves overseeing and optimizing the process of collecting payments owed to a country from customers located in different areas. तो अगर हम बात करें रिसीवेबल्स की, तो रिसीवेबल्स क्या है कि आप किस तरीके से आपको क्या मिलना है वो आप कलेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं. ठीक है. जैसे बिल्स रिसीवेबल्स, व्हाट वो कंसेप्ट तो आपको पता ही, व्हाट इज पीआर. तो इंटरनेशनल बिल्स रिसीवेबल इज बेसिकली कि इंटरनेशनली आपके डिफरेंट कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर्स से आप बीआर किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं. That is a crucial aspect of your global business operations, and because it ensures you that there is a timely cash flow, minimizes financial risk, maintains healthy relation with customers. So for that, what you have to do for having a good receivable management, what you have to do, the first step, you have to assess the risk, assess the credit risk. कि मैं जिस कस्टमर, इंटरनेशनल कस्टमर को क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्या वो क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं, क्या उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, उसकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है और कैसा मार्केट कंडीशन है उस कंट्री का, ये मुझे असेस करना बहुत जरूरी है. देन सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए कि पेमेंट टर्म्स क्या है, कब आपकी ड्यू डेट है, कौन सी करेंसी में हम एक्सेप्ट करेंगे आपके बीआर को, आपके बिल्स रिसीवेबल को, और या फिर कोई पेनल्टी है लेट पेमेंट्स की. ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन होने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. ठीक है. हमने क्रेडिट रिस्क को असेस कर लिया, हमने क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया. अब हमें करना है करेंसी को मैनेज. ठीक है. सो फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट कैन इंपैक्ट रिसीवेबल्स. तो लास्ट 2 यूनिट्स से, लास्ट 2.5 आवर्स से हम यही बात करें कि देयर आर रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस, देयर आर रिस्क इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज मोस्ट पर्टेनिंग टू योर फ्लक्चुएशन रूल्स, स्टॉक exchange rate fluctuations, volatility, currency volatility, right? So receivables में भी exchange rates है, तो वो exchange rates आप किस तरीके से hedging strategies को या offer pricing use करके customers local currency को mitigate कर रहे currency risk से. So that is how you can do the currency management. Then there is invoicing. What is invoicing? कि आप एक accurate invoice issue कर रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा गुड से कौन सा सर्विस रेंडर किया है, आपने लोकल रेगुलेशंस जिस कंट्री के कस्टमर्स है उनको आपने सही से इनवॉइस किया कि
उनके उस कंट्री के लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो किया है, ठीक है, एंड इट विल आल्सो फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो फिफ्थ स्टेप इज योर पेमेंट मेथड्स, कि ये जो रिसीवेबल्स है ये कस्टमर किस वे में, आपके जो इंटरनेशनल कस्टमर्स है वो किस वे के थ्रू आपको पेमेंट करेंगे, whether through wire transfers, whether through credit cards, online payment platforms, local payment platforms, at what payment methods, ठीक है। So these are the fifth step. Then the sixth step क्या है कि एक establish clear procedures for following up on undue accounts. आपको एक undue accounts का फॉलो अप रखना है कि कितने बीआरस है, कितने मंथ का बीआरस है मेरे पास, और कितने मंथ का बीआरस मुझे इश्यू करना है, कितना डेट कलेक्शन एजेंसीज मैं किनको एंगेज कर रहा हूँ ताकि वो कलेक्ट कर सके, कितना मैं पर्सनल कांटेक्ट रख पा रहा हूँ अपने लेटर्स से, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स कितना दे पा रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें आपको कलेक्शन प्रोसीजर्स में इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। Then you have to be considerate with the international trade laws and regulations related to your debt collection, dispute resolution, cross-border transactions. तो इनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. Apart from that, you have to maintain open communication with international customers to address any concerns or issues promptly. Building strong relationships can facilitate smoother payment processes and potentially lead to repeat businesses. Then obviously आपको टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन को incorporate करना है. Utilize software solutions for receivables management such as accounting software. Automation can streamline processes and reduce manual errors. So manual errors से आप बच सकते हो जब automation या technology को incorporate करेंगे. Then obviously the most critical part is how you can identify whether you are in a good way, you are doing the inventory management, your international receivable management, or aren't your companies not able to manage the international receivables, ठीक है। वो आप कैसे देख सकते हैं कि आपके receivables को आपने सही तरीके से मैनेज किया है कि नहीं, that is basically with the help of your monitoring and analysis. So आप अगर रेगुलरली मॉनिटर करेंगे अपने रिसीवेबल्स की परफॉर्मेंस को, आपकी मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, जैसे सेल्स डे सेल्स आउटस्टैंडिंग हो गया, बैड डेट रेशियोज हो गया, इनको आप एनालाइज करेंगे इन मेट्रिक्स को, तो आप अपने कैश फ्लोस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे. सो कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस इज अ नीड ऑफ पावर फॉर इंटरनेशनल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है। Okay, moving to the next topic, that is your international inventory management. हमने बात कर लिया कैश को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हमें रिसीवेबल्स को मैनेज करना है, अब हम बात करें किस तरीके से हम इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। So it involves overseeing and optimizing the process of managing inventory across multiple countries and regions. It is crucial for businesses engaged in global trade to efficiently manage their inventory to meet customer demand, minimize costs, maximize profitability. तो क्या क्या कर सकते हैं हम इंटरनेशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए? सबसे पहले आपको अपने सप्लाई चेन विजिबिलिटी रखना है, ठीक है। कि आपका इन्वेंट्री लेवल्स क्या है, आप किस तरीके से मूवमेंट अपनी इन्वेंट्री को कर रहे हैं, किस तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को फैक्ट्री से डिस्पोज करवा रहे हैं, किस नेचर का आपका गुड्स है, उस बेसिस पर ये भी डिपेंड करता है कि आपके गुड्स की आपकी प्रोडक्ट्स की मूवमेंट कैसा हो, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज देयर अक्रॉस ऑल योर लोकेशंस, ऑल योर इंटरनेशनल लोकेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग योर वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेल आउटलेट्स. सो for that you have to utilize your inventory management software and systems to track inventory accurately, ठीक है। How can we manage inventory management? Demand को forecast करना, क्योंकि ultimately what is our goal is to get the profit, and how we can get the profit by selling our products to customers, right? So customer के insights, उनके market trends, उनके historical data हमारे लिए बहुत important है to forecast कि जो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद वो एक्चुअल में एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प प्रिवेंट स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉक
कि डिमांड है लेकिन मैंने इतना मैन्युफैक्चर ही नहीं करवाया कि स्टॉक आउट हो गया, या फिर ओवर स्टॉक सिचुएशन भी हो सकता है कि मुझे लगा डिमांड बहुत हाई है लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर हाई नहीं उतना डिमांड, तो ओवर स्टॉक हो गया, मैंने कुछ ज्यादा ही बना लिया सामान। Then optimizing inventory levels and minimizing holding cost. तो holding cost एक प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रखने के लिए, उसके लिए आपको उसके स्टोरेज फी देना पड़ेगा, आपका उसमें कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग है, अगर वो कोल्ड स्टोरेज में तो कोल्ड प्रेस जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उसके लिए. So there is a holding cost and how you are optimizing that inventory levels. So these kind of things you have to carefully scrutinize, and that how can you scrutinize by forecasting your demand accurately, right? Then talking about your safety stock, कि आपने सेफ्टी स्टॉक कितना रखा है, आपने आपका बफर कितना है, ठीक है, कि अगर वेरिएबिलिटी अभी आता है डिमांड में, ऊपर नीचे भी हो जाता है, लीड टाइम्स में चेंजेस आते हैं, तो आप अपने सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ गई सप्लाई चेन में, तो आप किस तरीके से अपने सेफ्टी स्टॉक को यूज करके, अपने बफर को यूज करके आप अपने डिमांड की वेरिएबिलिटी को, लीड टाइम्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है. So consider factors such as lead time variability, demand variability, service level targets when determining safety stock levels. Okay. Then fourth is your supplier collaboration, कि आप कितने quickly collaborate कर रहे हैं supplier के साथ. So closely collaborating with suppliers to ensure timely and reliable supply of materials and products. Implement vendor managed inventory, supply managed inventory programs to delegate inventory management responsibility to suppliers. तो सीधा सप्लायर्स को ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, उनके साथ ही आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आपको मुझे नहीं सेंड करना, आपको डायरेक्टली आपको मेरे वेयर हाउस में सेंड करना है या डायरेक्टली मेरे कस्टमर तक सेंड कर देना है बाय यूजिंग दिस वेंडर मैनेज इन्वेंट्री और सप्लायर मैनेज इन्वेंट्री. Then you have to understand this cross border logistics. ऑब्वियसली ये हम सिर्फ इन एक कंट्रीज से बॉर्डरिंग नहीं कर रहे, हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में हम बिजनेस कर रहे हैं. सो देयर शुड बी ऑप्टिमाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट्स टू मिनिमाइज लीड टाइम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अगर मैंने एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया भी है, मैंने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के पास पीजी है, पीजी में मैं किस तरीके से अपने कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल कर पा रही हूँ थ्रू दिस लॉजिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ transportation, that also I have to consider. Okay, so I have to consider factors like mode of transport, shipping routes, custom clearance procedures, incoterms when planning your logistics. Okay. Then we have your inventory segmentation. Segment inventory based on factors such as demand variability, lead time, value. So you have to segment your inventory कि किस प्रोडक्ट की डिमांड पहले है, कितने की लीड टाइम है और किसकी इतनी वैल्यू है. तो उस हिसाब से आपको अपने इन्वेंट्री को कैटेगराइज करना है इनटू फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, फिनिशेबल, हाई वैल्यू, एंड different kind of strategies you have to apply in this kind of inventory segmentation. Okay. Then we have your ABC analysis. ABC means you have to classify your items as A, B, C based on their significance and allocate resource allotment. कि मेरे लिए ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है मेरे कैटेगरी में, तो ये ए कैटेगरी का है, देन बी कैटेगरी का है, देन सी कैटेगरी का है. सो द प्रायोरिटी विल ऑलवेज टू द ए कैटेगरी, देन बी कैटेगरी एंड देन सी कैटेगरी. सो इस तरीके से आपको अपने एबीसी एनालिसिस यूज करना है फॉर योर इन्वेंटरी मैनेजमेंट. देन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. Establish centralized control and coordination of inventory management activities across international locations. Implement standardized processes, policies, performance metrics to ensure consistency and efficiency. ABC analysis का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक रॉ मटेरियल है जो सिर्फ मेरे पास 50 रॉ मटेरियल्स है और प्रोडक्ट कैटेगरी ए में मुझे लगेगा 50 रॉ मटेरियल्स और कैटेगरी बी में मुझे 10 लगेगा, तो मैं कैटेगरी बी के 4 बना सकती हूँ या 5 बना सकती हूँ उस रॉ मटेरियल से. लेकिन मेरे लिए कैटेगरी ए जो है वो सबसे हाईएस्ट है क्योंकि उससे मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता है और वो प्रोडक्ट जिनके पास जाता है वो मेरे हाई रिटेंशन कस्टमर्स है. तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी किसको दूंगी, ए कैटेगरी इन्वेंट्री. ठीक है, तो ए कैटेगरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इन्वेंट्री लेगा उसको मैं प्रायोरिटी. सो एबीसी एनालिसिस टेल यू दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर प्रोडक्ट्स, कि किस इन्वेंट्री को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ए को, बी को, सी को, डी को, इस तरीके से उसके सिग्निफिकेंस एंड उसके बेसिस पर ही हम उस रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं. ठीक है, सो आई गेस द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज
Very much clear to all of you. International inventory management, not so much difficult. You can have a look on that. Then moving to the next topic. This we have already done, management of receivables. In inventory management we have done now, just now. Yes. Let's talk about the topic dividend decisions by MNCs. Dividend decisions by MNCs. So what we understand by dividend decision by MNCs? So while you are deciding कि कितना cash आपको distribute करना है shareholders को, company directors को, आपको ये ध्यान रखना है कि firms का objective क्या है. Firm का objective क्या है? To maximize the shareholder value. So whether you are disclosing interim dividend, where you are giving final dividend, and पिछले dividend से आप अपने dividend को increase कर रहे हो कि नहीं, 4 size strategies you have to incorporate while you are doing this dividend decisions by MNCs. The dividend payout policy should be based on investor preferences for cash dividends now or capital gains in future from enhanced share value resultant from reinvestment into projects with a positive NPV. So आपके पास जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है कि आप ये चाहते हो कि इन्वेस्टर का प्रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आप ये सोचते हो कि इन्वेस्टर क्या सोचता है. दो चीजें सोच सकता है, इधर कि वो उसको अभी कैश डिविडेंड चाहिए या फिर वो फ्यूचर के लिए कैपिटल गेन चाहिए. तो आपको इस चीज का ट्रेड ऑफ करके अपनी इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को समझना है. एंड एज अ रिजल्ट यू हैव टू डिसाइड ऑन what kind of dividend decisions you can take on. So many types of multinational company shareholders, for example, institutions such as pension funds and insurance companies, rely on dividends to meet current expenses, and any instability in dividends would seriously affect them. So an additional factor for multinational is that they have more than one dividend policy to consider. So multinationals के basically बहुत सारे dividend, बहुत सारे factors को consider करना पड़ता है when they are disclosing their dividend. So dividends to external shareholders, right? And dividend between group companies, facilitating the movement of profits and funds within the group. So these two things they have to consider while they're declaring the dividend. Alternate dividend policies क्या क्या हो सकते हैं? There are stable fixed amount, constant payout percentage, residual approach, zero payout. So ये सब आप पढ़ चुके हो कि what is zero payout dividend policy, what is what just yes, stable fixed amount policy, constant payout percentage. कुछ नहीं है, सिंपल है. स्टेबल फिक्स्ड अमाउंट की हर साल आप सपोज $100 की डिविडेंड देते हो, डिक्लेयर करते हो, तो हर साल आप $100 ही डिक्लेयर करेंगे. देन कांस्टेंट पे आउट परसेंटेज की जितना भी मेरा प्रॉफिट बचा उसमें से मैं सर्टेन परसेंटेज मैंने सोच लिया कि 1% ही डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी, तो इट्स कांस्टेंट पे आउट परसेंटेज. देन वी हैव रेसिडुअल अप्रोच की मैं सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके, रिटेन अर्निंग्स करके, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके जब मेरे पास बचेगा तभी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा. दैट इज रेसिडुअल अप्रोच. एंड एक और है जीरो पे आउट कि जहां मैंने सोचा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स आई विल नॉट पे द डिविडेंड, राइट? सो हर एक पॉलिसी के अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है. आई गेस यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. देयर आर कांस्टेंट पे आउट रेशियो जहां पर आपके dividends lag behind earnings but maintain even when earnings fall below the dividend level. So this has a ratchet pattern of dividends. So every have a different thing. So residual approach ki bhi dividends, approach to dividends is also have a good impact. If positive NPV projects are available, they should be adopted. Otherwise, funds should be returned to the shareholders. Then there are major key factors which dividend capacity affected by. ठीक है, जो डिविडेंड कैपेसिटी है वो किसी 9 फैक्टर्स से वो
affect किया जाता है. That is your what are the inflation strategy. Then liquidity, blocked remittance, access to other source of funds, growth, profitability, restrictive governance, legal position. These all are the key factors. ठीक है? What do you understand by blocked remittance or remittance blocking? If once a FDI has taken place, the government of the host country imposes a restriction on amounts of profit that can be returned to the parent company. कितना जो एक FDI होता है, foreign direct investment होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो कंट्री की जो पॉलिसीज होती है दैट कैन बी डिफर. तो वो कंट्री पॉलिसी ये हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री कैन इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन. ये बोल सकती है कि आप इतने % ही अपने प्रॉफिट को पेरेंट कंपनी को भेज सकते हो. ठीक है? सो दिस इज नोन एज ब्लॉक ऑफ रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स, कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उतना परसेंटेज आपका ब्लॉक हो जाता है टू सेंड इट बैक टू द पेरेंट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स. So this is all about your key factors, how we can block the remittances, how we can avoid this block remittances by making payments to parent company in the form of royalties. Dividends से नहीं भेज सकते हो, royalties से भेज दो, patents के through भेज दो, management fees, charges की तरफ से remittance कर दो, या फिर charging the subsidiary company additional head office overheads, additional HO overheads की तरह से आप भेज सकते हो. Then you can have a currency swaps जहाँ पर foreign subsidiary lends cash to the subsidiary of another company requiring funds in the foreign country. इस तरीके से भी आप remittance provide कर सकते हो, या फिर आप अपने transfer price को increase कर दो. ठीक है? So that is how you can do. So these are the various ways through which you can avoid the remittance being blocked or remittance blocking. Yes. Now moving to the next topic, that is your working capital management. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? यू ऑल नो दैट वर्किंग कैपिटल क्या है, सबको पता है. सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम इन दैट. Working capital is what you are what the liquidity, the cash amount you are required to do the day-to-day work, right? So MNCs in managing their working capital encounter with number of risks peculiar to sourcing and investing of funds, such as exchange rate risk and political risk. This already we have done in the unit 2. There are different types of risk when we are talking about multinational enterprises pertaining to your international financial management. That is, the first and foremost is your exchange rate risk and political risk. Exchange rate risk कि आप डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए एक्सचेंज रेट आपको ट्रांसफर प्राइसिंग करना है, आपको फंड ट्रांसफर करना है टू द सब्सिडीज. इन दैट आल्सो यू हैव टू अंडरगो फ्रॉम दिस एक्सचेंज रेट रिस्क. So MNCs also have a wider options of procuring funds for satisfying their requirements or the requirements of subsidiary or financing of subsidiaries by the parent. वो क्या कर सकते हैं? Borrowing कर सकते हैं, which includes banks, euro currency markets. So they have a multiple of sources from which they can procure the funds. So we have done with the international cash management. We have done with dividend decisions by MNCs. Now let's move to the international capital structure. International capital structure, or you can say capital structure for multinational corporations. So international capital structure for MNC or international capital structure क्या बोलता है कि how MNCs are leveraging their financial position and access to global markets to raise capital in cost effective and efficient manner. किस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर रहा है, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर रहा है ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अपने कैपिटल को रेज कर सके. ठीक है? So this gives these companies an advantage over small domestic operators. The capital structure multinationals use directly impacts profitability, growth and sustainability. तो कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहला है आपका इन्वेस्टेड कैपिटल. इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब जो कि सोर्सेज ऑफ मनी आपने यूज किया है, डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑपरेशंस यूज किया ताकि अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर सको, नए एसेट्स परचेस कर सको, अपने फाइनेंस ऑपरेशंस कर सको. तो इन्वेस्टेड कैपिटल इज बेसिकली
इट कंप्राइज ऑफ योर सोर्सेस ऑफ मनी. आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, आपका पहले का रिटेन अर्निंग्स है या इन्वेस्टर्स ने मनी पुट किया है, एंजल इन्वेस्टर्स ने पुट किया, सो दैट इज योर इन्वेस्टेड कैपिटल. So companies acquire capital through the sale of securities in financial markets such as New York Stock Exchange, London Stock Exchange. Either आप equity sale of securities in the form of equity आप कर सकते हो या फिर debt and equity आप कर सकते हो. Debt in the form of loan, in the form of debentures. So these are the two usual forms that the MNCs are using. That is your debt and equity. So cost of raising capital is important component of financing ratios. Apart from that, what we can consider under working capital structure, not working capital, international capital structure is debt financing. What is debt financing? It is a process that is contingent on the availability of funds in the global credit markets, interest rates, and corporations' existing debt obligations. So debt financing basically आप अपने फंड्स को ग्लोबल क्रेडिट मार्केट से आप रेज कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट्स which includes interest rates and corporations existing debt obligations. So if credit market are experiencing a contraction experience कर रहे हैं, so बहुत difficult है एक कॉर्पोरेट के लिए कि वहां पर वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को सेल करें फेवरेबल रेट्स पर. लेकिन वाइस वर्सा ऑफ दिस, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो बहुत इजी हो जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को टू सेल देयर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एट फेवरेबल रेट्स. So in particular, it may be challenging to get high adverse rates for asset-backed securities. If firm becomes over-leveraged, it may be unable to pay its debt obligations, leading to insolvency. तो अगर over-leveraged हो जा रहा है तो फिर ये debt obligations को pay नहीं कर सकते. Then secondly, you have your equity financing. You all get there are preference shares, there can be equity shares, there can be return earnings, which are considered as an equity capital. So it is a very important part. You know that because it is a basic equity cash flows that mitigate the risk associated with the currency fluctuations. So आप यहाँ पर कोई करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आप कोई रिस्क यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो. एंड इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स में कॉज स्टॉक प्राइसेस टू चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, stock prices to fall because investors no longer feel company shares are worth their pre-issuance price. So this kind of things can be there for equity financing. Then we have tax considerations. So while you are going through with international capital structure, you have to understand the tax consideration with your debt structure, with your equity structure, so that you have to scrutinally evaluate your tax planning strategies to minimize your tax liabilities. Then we have your determinants of capital structure of multinational enterprises. Determinants of capital structure by multinational enterprises. So what are the things? Yes, determines the capital structure of multinational enterprises. The important factors which we should consider while determining the capital structure of multinational enterprises is cash flow stability. Cash flow stability of the firm to service the debt is an important factor to be considered in determining the capital structure. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो cash flow है वो stabilized है. The sense that आप आपकी डेट पेमेंट कब करनी है, आपको इंटरेस्ट कब करना है, आपको रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कब करना है, आपके फ्यूचर कैश फ्लोस क्या है, कितने आपके इनफ्लोस होंगे, कितने आपके आउटफ्लोस हो सकते हैं फ्यूचर में, डेट कैपेसिटी क्या है फर्म की. डेट कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आप कितनी इजीली अपने डेट को रीपे कर सकते हैं, राइट. सो आप कौन से आपके डिफरेंट सोर्सेस है फॉर जनरेटिंग योर रेवेन्यूज. सो बेसिकली आपके कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस का एक स्ट्रक्चरल वे में एक अच्छे हाई प्रोपोर्शनल वे में अगर आप कर पा रहे हैं तो दैट इज योर कैश फ्लो स्टेबिलिटी. Then your financing flexibility. Financing flexibility means how you are using your unused debt capacity for future needs. What is that? This is that कि
एमएनसीज जो है वो यूजुअली लेस डेट लेते हैं under normal condition and preserve their debt capacity to issue debt securities on favorable terms in futures. For example, MNC can issue long-term debt securities when interest rates are low and thereby lock in low interest rates for many years. तो वो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज तब इशू करे जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है. मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% और वो ऑफर कर रहे 4.2 विच इज नॉट यूजुअल, राइट. और मार्केट फिर जब नॉर्मल हो जाए तो 7% हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो उसने लॉक करवा दिया एट 4.2%. सो दैट इज कैन बी अ फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी वेयर you are using your unused debt capacity for your future needs when the market is in a favor of you. ठीक है. Then you have your corporate taxes. What is corporate taxes? You all know that if the corporate tax rate is higher, the greater the advantage of using debt capital. So MNCs design their capital structure in such a way as to allow their subsidies in countries where the corporate taxes are higher to rely on local debt financing instead of relying on funds from the parent firm. तो जहां पर हायर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वहां पर आप डेट कैपिटल का हायर एडवांटेज कर सकते हो. तो आप इस तरीके से अपनी सब्सिडीज से एडवांटेज रिकॉर्ड कर सकते हो. वो सब्सिडीज जो उन कंट्रीज में है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्सेस हायर है एंड local debt financing, then local debt financing. So that can be a good source for your corporate taxes. Then floating cost, internal financing is always preferred since there are no flotation costs associated with the use of retained earnings. Flotation costs are higher in case of external equity financing as compared to other methods of financing. So flotation cost क्या होता है? Flotation cost basically are the cost जो आप एक transactions में एक पेरेंट कंपनी से सब्सिडी में आप सेंड कर रहे हो, जो आपको जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन द प्राइसिंग इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है. सो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हाई है in case of external equity financing as compared to other methods of financing. So generally firms क्या prefer करती है कि slow growth हो with the finance with the retained earnings से slow growth हो. Fast growing or growth oriented MNCs tend to use more debt financing. ठीक है. Then we have operating leverage. Operating leverage means firms with low operating leverage, that is low business risk, can afford having more debt than firms with high business risk. अगर आपकी low business risk है तो आप high debt ले सकते हो. That is operating leverage. Then cost of funds. So due to imperfections in global financial market जो है हमारा एकदम perfect नहीं है, right? So countries differ on the issue of cost of funds. So these imperfections exist mainly in the form of barriers on the flow of funds across countries or investment in a foreign country. So you have to be crucial when you are talking about the cost of funds, that the debt is relatively cheaper in some countries as because of excess supply of that funds, excess supply of funds in that particular country. So you have to change your financing strategies accordingly. If the cost of funds is there in that particular subsidiary, then you have to avoid that. Then we have your exchange rates. Exchange rate क्या होता है ये हमें पता है. So moving to the next topic. Again, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं exchange rates. So changes in exchange rate also need to be considered in determining the capital structure. जब आप capital structure को determine कर रहे हैं, international capital structure को, तो exchange rate को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि if a currency of a country in which the subsidiary of an MNC operates is weak against the functional currency of the parent firm allows the subsidiary to borrow in local currency instead of relying on the funds from the parent firm. मतलब कि मैं पेरेंट फर्म हूँ, आप सब्सिडरी फर्म है, तो यूजुअली हम सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम रख रहे थे. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या था? कैश सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम क्या था? अभी हमने पढ़ा था कि सारे सब्सिडरीज मुझे सरप्लस फंड्स देंगे, सरप्लस करेंसीज देंगे और फिर मैं उनको बोरोइंग्स दूंगी. ठीक है, मैं उनको लोन्स प्रोवाइड करूंगी. तो अगर ऐसा है और आपको ये दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सब्सिडरी है जहां पर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है कि उसको अपने करेंसी को कन्वर्ट करके आपको भेजने में, और आप उसको अगर लोन दे रहे हो तो उसको भेजने में बहुत हाई है, तो उस केस में
जो एमएनसीज है, जो पेरेंट कंपनी है, वो अपने सब्सिडरी को इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि आपको अगर बोरो करना है तो आप अपनी लोकल करेंसी में ही बोरो करें इंस्टेड ऑफ द फंड्स फ्रॉम माय पेरेंट कंपनी। ठीक है। So this is, you can see the how NPV of partial financing of a project with INR, revenues, operating expenses, interest on loans, earnings before tax, tax of 33%, then earnings after tax, then principal repayment of loan, amount to be remitted to the parent firm, amount received by parent firm, PV of cash flows, NPV. तो इस तरीके से आप then NPV को आप convert कर सकते हो in US dollar. So one of the question I have seen in your previous question papers. Yes. This is a question paper of 2019, regular. So this is a case study. Look, this we have done in the previous morning class. What is cross currency matrix? What are its uses? How we can convert this indirect and cross rates? ये आज हमने morning में ही ये numericals किया था, मतलब afternoon classes में. Similar question is there. Then again a case study where you have to advise whether the financial viability of the proposal is there or not. For that, you have to understand the international financial management, the core crux of that. Yeah. Then again, there is a foreign exchange trader gives following quotes. Then the quotes are there. This we have done also. We have done. ये outright quotes कैसे करते हैं for 3 months, 6 months forward, right? Spreads भी किया था हमने. What I was showing you a question relating to your this was a question of 2021, I guess. Last year question. 22 question paper. So globalization has made a tremendous impact throughout the world in the past few years. There are various reasons involved in this progression. We have already done. What are the reasons for the expansion of globalization? The first slide. Then a foreign exchange trader gives the following quotes for Belgian transport 1 month, 3 months, 6 months. So you have to do that. We have done this. कि हम quotes को किस तरीके से convert करते हैं cross rates में. Then yes, this is the appraisal question. This how they are calculating the cost of how they are calculating the your you have to carry out the appraisal project. In this question, there is the initial outlay is being given, useful life is there, salvage value is there. So as a result, you can calculate the depreciation in that. Then they are also saying that SLM is there. Then to support additional level of activity, there is a working capital of 15 million. Then sales is there of 30 rupees per unit. Then additional fixed cost is there for 5 million. Then forecasting selling price of 100 to sell 8,000 units. So ये सब आपकी information है to calculate this kind of cash flows. एनपीवी फाइंड करने के लिए. ठीक है. तो रेवेन्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन्स, earnings before tax, then tax rate is given in the question. Tax rate is your 45% and cost of capital is 20%. So आप इसमें इस तरीके से cost of capital को eliminate करेंगे, तो मतलब माइनस करेंगे उससे cost of capital को,
then you will come cost of capital, tax को minus करेंगे, then you will get the earnings after tax, then principal repayment of loan. इस तरीके से questions आपके आ सकते हैं. So you have to do the calculation. You have to find the present value of the cash flows and then you have to convert the NPV. ठीक है? Yes. These are not in your syllabus. Let's move to the next topic. That is your international transfer pricing. Yeah, international transfer pricing. What is that international transfer pricing? Basically, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एक टेक्निक है जहां पर आप अपने गुड्स सर्विसेज एंड इंटेंजिबल असेट्स को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द एंटिटीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन. डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन के दो कंट्रीज है, दोनों के टैक्स रिजाइम्स अलग है, दोनों के टैक्स रिस्ट्रिक्शंस अलग है. उन दो कंट्रीज के बीच में अगर आप अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्विस को, इंटेंजिबल असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एट व्हाट प्राइसेस, दैट इज अ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग. So, what kind of methods or what kind of techniques you can use for international transfer pricing? Number one, arm's length principle. Arm's length principle क्या है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा रेगुलेशन है जो जहां पर it requires that transactions between related entities be priced as if they were between unrelated parties under similar circumstances. तो आप उस तरीके से प्राइसिंग करेंगे दो एंटिटीज के बीच में जैसे कि वो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होता है. ठीक है? अगर सब्सिडरी है, मैं सब्सिडरी की तरह उसको ट्रीट ना करके मैं उसको एक सप्लायर की तरह ट्रीट करूं, तो उस प्राइस में अगर मैं सेंड करूं, दैट इज अ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल. तो इट रिक्वायर्स दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज बी प्राइस्ड एज इफ दे वर बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस. This principle ensures that profits are allocated fairly among group entities and that taxes are paid in accordance with the economic substances. So ये ensure करता है कि profits allocated है fairly among the group entities and taxes are paid in accordance with the economic substance. Second is documentation requirements. So many jurisdictions require multinational corporations to maintain detailed documentation to support their transfer price policies. So आपको transfer price policies के लिए documentation सही से आपको आना चाहिए. It includes your transfer pricing study that analyzes the comparability of related party transactions, selection of transfer pricing methods, justification and choosing transfer prices. आपने एक transfer price क्यों choose किया, इसका रीजन क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किन के बीच में है, क्या मेथड्स आपने यूज किया है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. Then we have your transfer pricing methods. What are the different types of transfer pricing methods to determine the appropriate transfer prices for related party transactions? The first includes comparable controlled price, that is CUP. कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस के बेसिस पे आप कर सकते हो, आप कॉस्ट प्लस पे कर सकते हो, रीसेल प्राइस पे कर सकते हो, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड्स में कर सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन यूज transfer pricing methods. ठीक है? The selection of most appropriate methods depends on nature of transactions and the availability of comparable data. कितना क्या किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, क्या नेचर है और कितना आपके पास कंपेरेबल डेटा है, दैट इज द मेन थिंग व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड इन द ट्रांसफर प्राइसिंग. ठीक है? Then we have the fourth one, that is advanced pricing agreements. What are these? These are between the taxpayers and tax authorities that establish acceptable transfer pricing methodologies in advance for a specified period. So APS क्या है? ये एक agreement है किनके बीच में? Taxpayers and tax authorities के बीच में, जहां पर एक पहले से acceptable transfer pricing methodologies in advance they have created that agreement for a specified period. ठीक है? इससे क्या होता है कि certainty provide की जाती है and इससे risk of transfer pricing disputes reduce किया जा सकता है. Then we have intangible property transactions, which often arise in transactions involving the transfer of intangible assets such as intellectual property, trademarks, patents. So valuing intangible assets and determining appropriate royalty rates require careful analysis of documentation to comply with transfer pricing. Then you have to do the compliances and reporting. You have to compile with the tax authorities, disclosing related party transactions to financial statements.
country specific transfer pricing reporting requirements. Then you have to assess the risk and management involved in this robust transfer pricing policies, and you have to maintain that documentation, and you have to uh, know what kind of global transfer pricing is there and how you can compile with that. You have to ensure the consistency, you have to price the guidelines, methodology, documentation requirements, and overall track strategies and business objectives. So this is what is your international transfer pricing. Okay. So let's see what we have done till now. In the unit 3, we have done with the capital market, working capital management in multinational enterprises, cash management, inventory management, receivable management, capital structure, cost of capital, determinants of capital structure, dividend ratios, and international transfer pricing. Okay. So we have left with only the topic working capital management in multinational enterprises. Then we can move to the next unit. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी हम कर चुके थे, राइट? क्या है होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, इट इज बेसिकली ऑल असेट्स ऑफ अ फर्म. Net working capital is the difference between current assets and current liabilities of a firm. Yes, we have done this, right? So we have completed with unit 3. Now let's move to unit 4, which talks about your managing currency risk and interest rate risk, types of risk exposure, transaction exposure, economic exposure, translation exposure, and all. ठीक है? Yes, let's start with the unit 4. That is your foreign exchange exposure and risk associated with that. Okay, in the meanwhile, write in the chat box whatever doubts you have. Yes. Moving to the next unit, that is unit number 4. It's all about your managing currency and interest rate risk. So foreign exchange exposure and risk, what is that? Financing of foreign trade, how we can finance our foreign trade. We can, there are different methods. Basically, there are 5 methods of payment in international trade. The first is advance payment, which is cash in advance, then your letter of credit, bill of exchange or draft or consignment, and open method, open account. क्या क्या होता है? पहला होता है आपका एडवांस पेमेंट. एडवांस पेमेंट क्या है? बेसिकली if the importer pays the exporter before the merchandise is shipped or transported, such payment is known as advance payment or cash in advance or prepayment. तो ये बेसिकली जहां पर हमारा मोड ऑफ एंट्री एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट के थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस करें, एक्सपोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस करें, उस केस में एडवांस पेमेंट होता है, जहां पर हम मर्केंडाइज शिप करने से पहले, प्रोडक्ट को शिप करने से पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें एडवांस पेमेंट मिल जाता है, जिसको हम प्री पेमेंट और एडवांस पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. Then we have your जो ये advance payment method है, this method of payment gives full protection to the exporter against risk like credit risk, country risk, currency risk. So
ये बहुत ही इजी मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है जहाँ पर रिस्क नहीं है फॉर द पेमेंट ऑफ योर international payments. Then we have your banker's letter of credit. In international trade, the parties, exporter or importer involved are in different countries and they may not know each other well. So the exporter normally expects that importer to pay cash on receipt of goods, if not in advance. So banker's letter of credit क्या है कि जहाँ पर the parties involved in different countries, दो कंट्री के बीच ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं. सो लेकिन जो दोनों पार्टीज है उनका एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. सो देयर कम्स द इंटरमीडिएट, द बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट. सो क्या करते हैं, तो एक्सपोर्टर नॉर्मली एक्सपेक्ट्स द इंपोर्टर टू पे कैश ऑन रिसीट्स ऑफ द गुड्स. जैसे ही आपको गुड्स मिलेगा तभी आप कैश पे कीजिए, ठीक है, नॉट इन एडवांस बट एट द मोमेंट जैसे ही आपको गुड्स मिलता है. So the importer usually expects that exporter to extend credit, और exporter importer क्या चाहता है कि हमें exporter credit extend करे. So इस दोनों के विश को पूरा करने के लिए the payment is backed by a bank. In other words, we can say that the exporter may like to have an undertaking by a bank for the payment of goods sold on credit to the importer. Such an undertaking is called banker's letter of credit or simply the letter of credit. So ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ लेटर issued by the bank on the behalf of and for the account of the buyer or the importer of the merchandise. So importer और buyer, मैं buyer कर रहा हूँ तो उसके मैंने एक लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के थ्रू इशू करवाया है. वो इशू करने से क्या होगा कि जैसे ही मुझे गुड्स मिलेगा आई कैन गिव इट टू द बिल ऑफ लैंडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं उस अमाउंट को डायरेक्टली एक्सपोर्टर को पे कर सकती हूँ, ठीक है. तो सच पेमेंट इज नोन एज पेमेंट एंड साइट. जैसे ही आपको गुड्स मिले आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज पेमेंट एंड साइट और बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट. Let's consider an example. Suppose इंडियन कंपनी है, वो कुछ सर्टेन गुड्स यूएस कंपनी से बाय कर रही है. इंडियन कंपनी वांट्स टू बाय फ्रॉम यूएस कंपनी, ठीक है. सो उसने एक परचेस ऑर्डर प्लेस किया विद द यूएस कंपनी. साइमल्टेनियसली इंडियन कंपनी ने अप्रोच किया एसबीआई को इन मुंबई कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट ग्रांट करे फॉर $2 million. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक $2 million का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया टू द यूएस कंपनी थ्रू इट्स लोकल बैंक. लोकल बैंक कौन है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक. सो ऑन नोटिफिकेशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है यूएस कंपनी को, उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया अपने गुड्स को हमारे पास, इंडियन कंपनी के पास. और as soon as the exporter has shipped the goods and presented the stipulated documents to the bank, जैसे ही एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आपने बिल ऑफ लैंडिंग आपने अपने बैंक का, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को आपने शो कर दिया, इमीडिएटली वो $2 million आपके पास आ जाएगा. So as soon as exporter has shipped the goods and presented the stipulated documents to the bank, it's entitled to the value of shipment. The importer who requests a bank to open a credit of letter is known as accredited buyer. तो इंडियन कंपनी यहाँ पर accredited buyer होगी और बेनिफिशियरी जो है जो जिसको ये अमाउंट मिला है is known, is called as a beneficiary of letter of credit. I guess now the concept of letter of credit is clear to you all. अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट के भी 5 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप क्या है, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये एक अंडरटेकिंग है गिवन बाय द बैंक दैट दे कैन विथड्रॉ on the conditions if the conditions are changed at any time unilaterally by the issuing bank, and the exporter can do nothing about it even though he or she may have shipped the goods in accordance with the terms and conditions of the letter of credit. रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है, जैसे अपने एक्जांपल दिया, एक इंडियन कंपनी है, एक यूएस कंपनी है. हमें यूएस कंपनी से बाय करना था, हमने एसबीआई को बोला कि $2 million का $2 million का आप लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ऑफ अमेरिका को दे दीजिए. बैंक ऑफ अमेरिका जैसे ही वो शिपमेंट होगा तो जो सेलर है वो बिल ऑफ लैंडिंग अमेरिकन बैंक एक्सप्रेस को दिखाएगा और वहां से वो $2 million ले सकता है. लेकिन रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि उसमें एक सर्टेन कंडीशंस होती है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट
कभी भी विड्रॉन किया जा सकता है एनी टाइम यूनिलैटरली बाय द इशूइंग बैंक। इशू कौन कर रहा है? एसबीआई। तो एसबीआई कभी भी इसको रिवोक कर सकता है इवन इफ एक्सपोर्टर ने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है, शिप कर दिया है, तब भी। ठीक है, दिस इज रिवोकेबल। देन वी हैव इररिवोकेबल। इनरिवोकेबल मतलब वही जहां पर आप कैंसिल कर ही नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे कि आप उसको कैंसिल ही नहीं कर सकते हो। सो इट इज अ डेफिनेट अंडरटेकिंग बाय इशूइंग बैंक। Then we have red clause letter of credit. Red clause letter of credit is basically जहां पे एक special clause लिखा होता है, red ink से लिखा होता है, under which another bank called the negotiating bank is authorized to grant an advance to a beneficiary on behalf of issuing bank. मतलब जहाँ ये हमने example देखा, Indian company, American company, Indian company wants to buy from the American company. एक लेटर ऑफ इशू, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया मैंने एसबीआई बैंक से $2 million US, और उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को दिया। रेड क्लॉज लेटर ऑफ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होगा? रेड इंक से लिखा होगा कि आप ये जो एक्सपोर्टर है उसको एडवांस दे दीजिए ऑफ $50,000। ठीक, एडवांस कोई भी अमाउंट का एडवांस आप दे दीजिए। तो इवन विदाउट ट्रांसफरिंग द एक्चुअल अमाउंट बाय द एसबीआई, जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने एडवांस दे दिया टू द एक्सपोर्टर। So that is known as red clause letter of. Then we have back-to-back letter of credit. Back-to-back letter of credit is issued by a local bank in favor of supplier of the beneficiary. तो back-to-back letter of credit कौन issue करेगा? Local bank. Local bank इस केस में कौन है? आपका बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, वो सप्लायर को, बेनिफिशियरी को वो issue करेगा। For example, suppose that a firm in Chennai is beneficiary of letter of credit. It has requested the negotiating bank to issue a back-to-back letter of credit in favor of firm in Delhi, which is supplied certain components to it. अच्छा, क्या है इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं? वही सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, आप अमेरिकन कंपनी है। मैंने एसबीआई को बोला लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देने के लिए, उन्होंने इशू किया $2 million का टू द अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। अब बैक टू बैक क्रेडिट में क्या है कि आप जो यूएस कंपनी है, आपने बोला कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मी, आप जापान की दूसरे किसी कंपनी को आप ये दे दीजिए, या यूएस के ही एक दूसरे कंपनी को आप ये प्रोवाइड कर दीजिए। दिस इज अ बैक टू बैक क्रेडिट ऑफ क्रेडिट। So it should be matched with the terms and conditions of the original foreign letter of credit. That amounts to a back-to-back letter of credit must be less than the amount of original foreign letter of credit. तो जो back-to-back letter का amount है वो कम होना चाहिए जो original foreign letter of credit से था। So these are the 4 types of credit of letter. Then the 5th is your standby letter of credit. Standby letter of credit in case the importer fails to pay the invoice amount to the exporter as agreed, then the standby लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स इनटू इफेक्ट। मतलब अगर ये सब हो गया, मैंने एसबीआई को बोला $200 का लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को, लेकिन जो इंपोर्टर है मैं ही पे करना, इन केस ऑफ इंपोर्टर फेल्स टू पे द इनवॉइस अमाउंट टू द एक्सपोर्टर एज अग्रीड। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इंस्ट्रक्शन तो दिया था एसबीआई को, लेकिन मैंने $200 million नहीं पे कर पाई, मैं सिर्फ $50 million पे कर पाई। दिस इज नोन एज स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट। That is, when the importer fails to pay the amount to the exporter as per the terms and conditions of the sale, the exporter may use this letter of credit to obtain payment from the issuing bank. Such a letter of credit is known as standby letter of credit. The standby letter of credit serves the performance bond to ensure that importer will make the payment to the एक्सपोर्टर एज अग्रीड। ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? अलग से लेटर ऑफ क्रेडिट रखा जाता है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं हुए तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा rather than the original one. इसके बेनिफिट्स बहुत है। आप पॉलिटिकल करेंसी रिस्क को अवॉइड कर पा रहे हो, आप अनसर्टेनिटी ऑफ पेमेंट को अवॉइड कर पा रहे हो, आप इमीडिएट क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। देन टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट करवा पा रहे हो, और सिंस इशूइंग बैंक एक रिप्यूटेड बैंक है तो आपका क्या कहते हैं, देखा जाए तो आपका कैश एडवांस में ही आ रहा है। ठीक है, दैट इज फ्रॉडिंग होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। Then another type is your bill of exchange. What is another type? Another type of your sources of another type of methods of payment. First we have talked about advance payment, then letter of credit. Now third one is bill of exchange. Bill of exchange क्या होता है ये आप सबको पता है। So in short, एक बार हम
देख लेते हैं व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली ये एक negotiable instrument होता है, right? You all know that. Under the, if we are talking about in Indian context, then according to Section 5 of Indian Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by its maker, directing a certain person to pay certain sum of money to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक साइन करता है कि जिसके पास ये होगा उसको आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस में भी, इंटरनेशनल स्फेयर में भी इस तरीके से बीआरस होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स ऑफ बीआरस, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स ऑफ बीपी, बिल्स पेमेंट. There are another category of bills of exchange that is known as side bill. Side bill and a time of usage in bills. Side bills ऐसे bills of exchange होते हैं जो कि जैसे ही आपके ऑन साइट आपको वो मिलेगा, जैसे ही आपको वो सामान मिल गया है, गुड्स मिल गया है, सर्विस मिल गया है, upon presentation and on demand you are getting that bills of exchange, that is side bill. ठीक है. So when an exporter ships the goods to an importer under the side bill, the importer's bank will not release the shipping documents to the importer until the bill is paid. This is known as documents against payment, DP. When exporter ships the goods to the importer under the issuance bill, the shipping documents will be released. So this is a DA. ठीक है. So DP and DA, similarly BP and BR, वैसे DP and DA की साइड बिल जैसे ही वो सामान मिला तभी जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं, इस BR को दिखाएंगे नहीं, तब तक हम आपको पेमेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं करेंगे. Then we have consignment. Consignment भी एक method of sale है according to which exporter ships the goods to the importer for sale, but retains the title of goods until they are sold to a third party. Title of goods उनके पास रहता है जब तक कि वो third party तक sell नहीं होता है. The importer sells the goods to others and remit the sale proceeds to the exporter after deducting the expenses. Suppose मैंने 100 goods है, वो मैंने B party को sell किया. B party के पास अभी for the time being goods का title है, फिर उसने सी पार्टी को सेल किया धीरे धीरे, और उसके बाद जितने भी उसको प्रोसीड्स आए उसमें से उसने अपने एक्सपेंसेस को माइनस किया एंड देन उसने ए पार्टी को सेंड बैक किया. सो दिस इज द कंसाइनमेंट. सो इन दिस द एक्सपोर्टर बियर्स ऑल द रिस्क इन द कंसाइनमेंट सेल. तो अगर वो जो गुड्स मैंने सेंड किया है, मैं एक्सपोर्टर हूँ, वो गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेरिशेबल है, खराब हो जाता है और थर्ड पार्टी को वो सेल नहीं कर पाता है कंसाइनी, तो सारी जो रिस्क है दैट इज एसोसिएटेड ओनली विद मी, दैट इज द कंसाइनमेंट, दैट इज एक्सपोर्टर. Then we have another method of payments, that is an open account. So open account sale is one method through which an exporter finances an importer. Exporter finance करते importer को. When an exporter has much familiarity with the importer after having business dealings for a long time, he or she may sell the goods to the importer on an open account. So open account transactions क्या होता है, जहाँ पर exporter ship करते हैं goods को importer को, and importer pays the amount to the exporter sometime later as per the understanding between the importer and exporter. मतलब क्रेडिट पर कि हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं, इतने दिनों से हम बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, हमें इतनी फेमिलियरिटी है कि मैंने आपको गुड्स सेंड कर दिया, सप्लाई कर दिया, लेकिन आप बहुत दिन बाद मुझे पेमेंट कर रहे हैं. तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा कुछ भी नहीं लगता है. इट इज इन्वॉल्व इन ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शंस. So exporters bears all the risks. तो मेरे ऊपर रिस्क सारे मेरे ऊपर है कि अगर importer पेमेंट नहीं भी कर रहा है तो that risk is on to me because I'm only relying on the trustworthiness of the importer. Okay, moving to the next topic, that is how we can manage the currency risk. We have talked about currency convertibility, the risk associated with currencies, fluctuations that we have already talked about. तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इस रिस्क को, करेंसी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. सो उसके लिए हम टेक्निक्स यूज करेंगे, हेजिंग एंड अदर टेक्निक्स. सो बेसिकली करेंसी रिस्क क्या है? ये एक ऐसा रिस्क है जो कि रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ करेंसी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ओरिजिनेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर German stock purchase कर रहा है for 100 euros, while holding this bond, the euro exchange rate falls from 1.1
5 to 1.3 euros per US dollar, then when the investor sells the bonds, he or she will realize a 13% loss upon conversion of profits from euros to US dollars. So, इसलिए we have to understand what is this currency risk and how we can mitigate that. लेकिन अगर इसने पहले ही हेज कर लिया होता, पहले अपनी पोजीशन को शॉर्ट सेलिंग ऑफ यूरो कर ले किया होता, तो इसको ये 13% लॉस नहीं होता. तो to mitigate the currency risk, you have various options like currency futures, forwards, options. But these instruments are often expensive and complicated to use for individual investors. So one simple, flexible and liquid alternative to hedge against currency risk क्या है? Currency focused exchange traded funds. So ये क्या है? ये several large financial institutes offer करती है, which is your exchange traded funds. So दो most popular providers है, एक है currency shares और एक wisdom tree. ये दोनों ही provide करती है आपको EFTs, that is exchange traded funds, which covers a number of different currencies around the world, and these currencies include popular international investment destinations ranging from Canada to emerging markets like China and Brazil. So apart from your currency futures, forwards and options, you can also take help of currency focused exchange traded funds to mitigate your currency risk. ठीक है? अब आते हैं हम next topic पर, that is your foreign exchange exposure. So a change in exchange rate may bring about a change in value of assets, liability, and operating income, either through their direct relationships or through common underlying factors. So Michel Alpler and Bernard Damas ने foreign exposure को define किया है कि एक sensitivity of changes है. Real domestic currency of values of assets, liabilities, and operating incomes में कितना actual में domestic currency में real changes आ रहा है in respect to the anticipated unanticipated changes in the exchange rates. So ये इसकी जो sensitivity है वो हम इस formula से derive करते हैं, that is your change in real domestic value of a particular item. Particular item can be anything, your assets, your liabilities, or your operating incomes, is equal to alpha, that is constant, plus beta. Beta is your slope of regression line, which measures the sensitivity of value of item to unanticipated changes in foreign market risk, foreign exchange rate. बीटा क्या आपको डिटरमाइन कर रहा है? बीटा क्या है? वो आपकी सेंसिटिविटी को मेजर कर रही है कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आ जाता है, दैट इज योर बीटा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन change S, that is unanticipated changes in exchange rate between domestic currency and foreign currency. Divide by multiply हम किससे कर रहे हैं? कोई unanticipated changes आ जाता है in exchange rate between domestic currency and foreign currency, plus mu. The beta coefficient measures the exposure of an item with respect to corresponding exchange rate, and in other words, beta value represents the value of item in foreign currency that is at risk due to unanticipated exchange rate fluctuations. So basically your beta is what? Beta coefficient is what? कि आप कितने foreign currency, कितनी आपकी beta क्या है, आप कितना unanticipated exchange rate fluctuations क्या है, that is a risk. If it is assumed that values of receivables, payables, deposits, and loans are influenced by changes in foreign exchange rate alone, the value of alpha and mu in the equation becomes zero. अगर हमने क्या बात किया? हमने ये बात किया कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर क्या है, ये एक सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करती है. कैसे सेंसिटिविटी? कि ये मेजर करिए कि क्या चेंजेस अगर रियल डोमेस्टिक करेंसी वैल्यूज में आती है, अगर अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट्स में, किसके ऊपर? असेट्स, लायबिलिटीज और ऑपरेटिंग इनकम्स में. हम अब ये बात कर रहे हैं कि यही असेट्स में अगर हम ये मान रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, पेबल्स, डिपॉजिट्स एंड लोन्स, जो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इनकम में रिसीवेबल्स, पेबल्स, डिपॉजिट्स एंड लोन्स है, इनकी वैल्यू अगर हम ये बोल रहे हैं कि are influenced by changes, they are influenced by the changes in foreign exchange rate alone, then
हमारा अल्फा एंड म्यू 0 हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट change in RV equals to beta multiplied by change in RS, change in S, which is also we can equating that beta equals to change in RV divided by change in S. For example, अगर example देखें हम तो receivables of US dollar 1 million will remain the same in US dollar terms over time, irrespective of changes in exchange rate between US dollar and INR. But in terms of INR, the value of these receivables change with change in exchange rate between the US dollar and Indian rupee. Example देखते हैं. Suppose spot rate of US dollar per rupees was 43.75 a month ago and rupees 44 at present. In this scenario, the Indian firm which has 30-day receivables of US dollar 60 million will find their value has increased from 2,625 million to 2,640 million. For a change of 0.25 per US dollar, there is a change of rupees 15 million in the value of receivables. So beta of receivables can be calculated as beta equals to 0.25 per US dollar divided by 15 million rupees. So which is coming to as US dollar 60 million, right? 0.25 divided by 15 million, 0.6, that is 60 million US dollar. So इस तरीके से receivables have a foreign exchange exposure. कितना foreign exchange exposure है of 60 million US dollar. And this amount is the risk to unexpected changes in foreign exchange rate. तो इतना risk हो सकता है if there is a unexpected changes in foreign exchange market. ये हमने बात की था 30-day पेबल में, और यही अगर 60-day पेबल हो जाता फॉर 60 मिलियन US डॉलर, देन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप आ जाता बिटवीन INR ऑफ पेबल्स एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना हो जाता US डॉलर पर INR 43.75 to US dollar INR 44 will have result in extra INR amount of payments. In this case, what will be the beta? Beta will be negative 15 million divided by 0.25, that is negative US dollar 60 million. So इसमें the risk, the exposure of receivables or payables in US dollar 60 million, and this amount is that amount that is the risk due to unanticipated changes in exchange rate between Indian rupee and US dollar. US dollar and Indian rupee में अगर हमने anticipated unanticipated changes की वजह से जो risk देखा था वो था हमारा positive 60 million dollar. और अगर हम Indian rupee to the US dollar देखें तो इस केस में अगर unanticipated changes in exchange rate है, then that risk will amount to negative US dollar 60 million. There is another example, you can solve it by yourself. So अगर हम ये देखिए, by definition we can say that foreign exchange exposure exists. कहाँ exist करता है? जहां पर only if the changes in exchange rate is unpredictable. जब जो exchange rate changes है वो unpredictable हो जाए, उस time पर foreign exchange exposure exist करता है. That is, it can only arise if the actual change in exchange rate is different from the anticipated changes. Suppose मैंने ये expect किया था कि 60 million, suppose मैंने ये assume किया था कि has fixed the price of its products to be exported on a 30-day credit by taking into account the anticipated changes in its home currency value relative to foreign currency. In this case, the exporter is free from foreign exchange exposure क्योंकि उन्होंने anticipate कर लिया कि यही होगा. लेकिन अगर कुछ unanticipated changes आ जाता है, in that case, we are termed it as a foreign exchange exposure. Obviously, the foreign exchange exposures have multiple implications on not only on the domestic assets, liabilities, and operating incomes of the firm, but also on the foreign liabilities, foreign assets, and foreign operating incomes.
ठीक है. Suppose आप एक domestic firms, domestic borrowings are affected by domestic interest rate changes, which in turn are influenced by unanticipated exchange rate changes. So even though if there is no conversion from foreign currency into domestic currency, the domestic liability is to expose the exchange rate movement. I guess that is clear. Foreign exchange exposure. Now moving to foreign exchange risk. Foreign exchange risk is basically the variance of the domestic currency value of assets, liabilities, or operating incomes that is attributable to unanticipated changes in foreign exchange rates. So, आपका foreign exchange risk क्या है? ये एक ऐसा variance है, किसका? Domestic currency value of किसका? Assets, liabilities, or operating income that is attributable to unanticipated changes in foreign exchange rates. So, जो foreign exchange risk है, वो totally depends upon the exposure as well as the variability of unanticipated changes in the relevant exchange rate. So, formally, we can state that variance of the change in value of a business item caused by unanticipated changes in the foreign exchange rate is equal to beta variance of change in S. That is regression coefficient, which describes the systematic relationship between change in RV and change in S multiplied by variance of unanticipated changes in foreign exchange rate. So this is the formula of foreign exchange risk. That is variance of change in value of business items caused by unanticipated changes in foreign exchange rate multiplied by beta is equal to beta multiplied by variance of unanticipated changes in foreign exchange rate. Just like I stated earlier that ये जो foreign exchange model है, foreign exchange risk model है, this totally depend on the function that it is a function of exposure and variance of exchange rates. So exposure जो है या जिसको unpredictable nature of exchange rates बोलते हैं, that cannot be the alone result in foreign exchange risk. So दोनों चीज होता है उसमें exposure भी and variance भी. So for example, if operating cash flows of British firms are highly sensitive to the exchange rate between GBP and Japanese yen, in this case, the firm has to very high foreign exchange exposure. अगर आपकी operating cash flows बहुत ज़्यादा highly sensitive है for the exchange rate between GB pound and Japanese yen, तो इस case में आप high foreign exchange exposure में है. So it is predictable that exchange rate of Japanese per GBP during a particular period would be almost steady. In views the predictability of exchange rates, the foreign exchange risk of firms operating cash flows is minimal. So उस time पर obviously operating cash flows जो होगा वो minimal. अब आते हैं regarding your types of exposure. अगर हम बात करें types of exposure तो simply आपके 3 types है. That is your translation exposure, economic exposure, and transaction exposure. Translation exposure, economic exposure, and transaction exposure. Translation exposure जिसको हम accounting exposure भी बोलते हैं. It is a result from a restatement of values of items of financial statements of a multinational corporation. मतलब क्या है translation exposure? जब आप एक parent company है और आपके subsidiaries हैं, तो एक ट्रांजैक्शन को आप जब सब्सिडी कंपनी के ट्रांजैक्शंस को आप अपने पेरेंट कंपनी के ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग रीस्टेटमेंट करते हैं, फाइनेंशियल आइटम्स को रीस्टेटेड करते हैं. इन दैट सिनेरियो फॉरेन करेंसीज आर रीस्टेटेड इन द होम करेंसी ऑफ एन एमएनसी. सो इसके एक बेसिस पे कि डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ रिलेवेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, सच रीस्टेटमेंट में रिजल्ट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेस. Suppose to analyze the financials of 2 subsidiaries, one in Japan having accounting in Japanese yen and one in US accounting in US dollar. So दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे कन्वर्टेबिलिटी करना पड़ेगा. तो कन्वर्टेबिलिटी फॉरेन करेंसीज की कन्वर्टेबिलिटी किस एक्सचेंज रेट में, किस फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में मैं करूंगी और किस डे पर करूंगी, कौन सा ट्रांजैक्शन का हर एक दिन पर करूंगी या दिन में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कौन से रेट पर करूंगी. दैट रीस्टेटमेंट ऑफ
two currencies to have in that financial statements can result to this translation exposure. जब आप translate कर रहे हो, in that scenario आपके foreign exchange gains and losses हो सकते हैं because आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक करेंसी का दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंग आप इक्वलाइज करना चाह रहे हैं, तो उस ट्रांसलेशन में बहुत सारे एक्सपोजर रिस्क आ जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर डे में ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस पर्टिकुलर डे का ट्रांजैक्शन में कौन से टाइम का आप एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे. सो उस डेट पर आप उस डेट उस टाइम पर कन्वर्ट करेंगे. सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपोजर कैन बी देयर. देन वी हैव योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. Exchange rate fluctuations influence the future cash flows of a firm. That is, the value of a firm is subject to transaction exposure as well as operating exposure. So, economic exposure क्या होता है कि आपके future cash flows पर depend करता है. exchange rate fluctuations जो है वो influence करता है आपके future cash flows. Also, a value of a firm is subject to the transaction exposure as well as operating exposure. कि transaction exposure क्या है और ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या, दोनों में ही वो डिपेंड करता है. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब होता है, जब फर्म्स के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटीज आर एक्सपोज्ड टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स. व्हाइल ऑपरेटिंग एक्सपोजर कब अराइज होता है, जब फर्म का रियल एसेट्स या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एक्सपोज्ड टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, ये इंपैक्ट है. किस चीज का इंपैक्ट है, अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं एक्सचेंज रेट्स पे on future cash flows arising from foreign currency denominated in contractual transactions as well as on future cash flows to be generated by real assets of a firm. That is an economic exposure. ठीक है. Then we have your transaction exposure. Transaction exposure बहुत common है for the MNCs. Because in these transactions there involves a future cash inflows and outflows of foreign currency. हम कभी भी जो भी हम NPV कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं या फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं, एवरीथिंग इज फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, इन फ्यूचर में मुझे इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होगा कि नहीं. सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है तो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के कैश इनफ्लोज एंड फ्यूचर के आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसी, उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं. सो एनी चेंज इन एक्सचेंज रेट between a time a transaction is initiated and a time the transaction is settled in home country affects the cash inflow and outflows in the home country. कि transaction initiate जिस दिन हुआ और transaction settle जिस दिन हुआ home currency में, उस दिन के बीच का जो time है, time frame में आपका transaction exposure हो सकता है. So basically it is a potential change in value of contractual cash flows that arise due to unexpected changes in foreign exchange rate. So it is a measure of the sensitivity of home currency value of assets and liabilities in foreign currency to unanticipated changes in exchange rates. कि उस time period में जो unanticipated changes अगर आते हैं exchange rates में, so that is coming under this transaction exposure. For example, एक example लेते हैं. India has sold goods worth $1 million to a client in US on a 3-month credit. मैं इंडिया हूँ, आप US हैं. मैंने आपको सेल किया मेरे गुड्स फॉर $1 million ऑन 3-month क्रेडिट बेसिस. मतलब 3 महीने बाद आप मुझे $1 million देंगे. ठीक है. It will have to convert the US dollar into Indian rupees at the spot rate willing at that time. उस टाइम पर जो spot rate है उस टाइम पर आप उतना देंगे. So since the future spot rate is not known exactly, INR receipts from this foreign currency denominated transactions become uncertain. अब spot rate आज से 3 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता. So इसलिए वो अनसर्टेन हो जाता है. ठीक है. So US dollar appreciate भी कर सकता है, depreciate भी कर सकता है against INR. Even INR receipts will be higher or lower. So it depends upon whether US dollar is appreciating or depreciating after 3 months. So that's creating an uncertainty. So that is a transaction exposure. So the firm will have to gain or losses in INR terms depending on whether the foreign currency has appreciated or depreciated. So similar gains or losses can be recorded with transactions that involve firms in contractual foreign currency denominated obligations like bills payable. Bills payable में भी ये transaction exposures आप देख सकते हो. ठीक है. Okay, then moving to the next topic. How we can manage this transaction exposure? This is now a very important topic. that हमने बात तो की कि transaction exposure होता क्या है, लेकिन अब इसको mitigate कैसे कर सकते हैं.
मैंने ये बोला कि मुझे आपको 3 महीने बाद मुझे सामान बेचना है, नहीं, मैंने सामान बेच दिया, 3 महीने बाद आप मुझे पैसे दोगे, तो उस टाइम पर जो स्पॉट रेट होगा उस पर आप मुझे पैसा दोगे, लेकिन वो अमाउंट डॉलर अप्रिशिएट भी हो सकता है, डिप्रिशिएट भी हो सकता है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अनसर्टेन है। तो उस चीज से, इस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से हम किस तरीके से खुद को मिटिगेट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जस्ट यू कैन सी द टेबल हियर, फ्लो चार्ट हियर। फर्स्ट इज योर हेजिंग टेक्निक्स एंड अनदर वन इज योर ऑपरेशनल टेक्निक्स। हेजिंग टेक्निक्स में आपके आते हैं फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, मनी मार्केट हेज, स्वैप्स एंड ऑप्शंस। एंड देन ऑपरेशनल टेक्निक्स में आते हैं आपका नेटिंग एंड ऑफसेटिंग, करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग, लीडिंग एंड लैगिंग। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं क्या है ये सारे। सबसे पहले हम अगर बात करें हेजिंग विद फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर, फॉरवर्ड्स क्या है, एक लीगल इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है टू बाय और सेल सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एट अ टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, उस टाइम $1 इक्वल्स टू हाउ मच इंडियन रुपीज, वी डोंट केयर, लेकिन हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतने फिक्स एक्सचेंज रेट पर उस टाइम पर हम ये बाय सेल करेंगे इस अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी को। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, टू हेज द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था 3 मंथ रिसीवेबल्स में, तो अगर अभी 40 रुपीज चल रहा है, तो आगे जाके वो 3 मंथ्स बाद 39.75 भी हो सकता है, और 39 या फिर 41.25 भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको हेज कर दिया हमने 40 INR में, ताकि 40 रुपीज तो मिलेगा, इरेस्पेक्टिव वो कम जाए या ज्यादा जाए। Then we have money market hedging. Money market hedging is basically a firm can lock in the home currency value of future cash flows in foreign currency through a money market hedge. So it involves क्या है simultaneously borrowing कर रहे, lending कर रहे या investing कर रहे money market में, जिससे कि आप foreign exchange exposure को reduce कर सके या avoid कर सके with regard to your money market, that is your receivables or payables. ठीक है, so एक सपोज एक फर्म है, वो हेज करना चाहती है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को, तो वो क्या कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर किस पर, रिसीवेबल्स पर, so he can the firm can borrow or lend foreign currency to the money market so that its assets and liabilities in the same currency will match. So only firms that have access to international money market can use this type of hedging effectively. जो international money market को access कर सकते हैं, उनके जो participants हैं, वही ये money market hedging कर सकते हैं। ठीक है, also there is a direct relationship between money market hedging and forward contract hedging. इसमें money market hedging involves taking money market position to hedge exposure on a foreign currency. Same things are repeating. So basically you can understand money market exposure hedging क्या आपको होता है, जहां पर आप hedge कर रहे हैं receivables को in the international money market in a foreign currency that may borrow a certain amount in currency denominating the receivables. Then we have another type of hedging, that is your hedging with currency options. So currency option hedging is a technique that avoids the problem which we have discussed above, right? So in this, what currency option ये क्या है, ये basically contract है जो buyer को ये right देता है, obligation नहीं है, एक right है कि वो buy कर सकता है या sell कर सकता है specified currency at specified exchange rate in the future. ठीक है, ये right है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं कि करना ही पड़ेगा। सो ऑप्शंस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। दो ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस क्या है, इट गिव्स द ओपिनियन होल्डर ऑप्शन होल्डर the right to sell a specified quantity of foreign currency to option seller at a fixed rate of exchange on or before the expiration date. तो ये जो पुट ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन एक ऑप्शन होल्डर को ये राइट देता है कि वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी को सेल कर सकता है to the option seller at a fixed rate of exchange before or on the expiration of date. Okay. Then another one is your call option. Call option क्या है, ये option holder को ये right देता है कि वो specified quantity of foreign currency को buy कर सकता है from the option seller at a predetermined exchange rate on or before of the expiration date.
So these are the techniques to mitigate the transaction risk, transaction exposure. Then we have your hedging with swap contracts. Swap contracts वो क्या होता है? एक agreement है between two parties to exchange a cash flow in one currency against the cash flow in another currency according to predetermined terms and conditions. ठीक है? So basically ये क्या है? ये एक periodic payments from one party to another in order to safeguard against unfavorable exchange rate movements. मतलब ABC कंट्री है, मुझे एक कंट्री से को पे करना है, तो B can instruct me that instead of paying me, you can pay to slightly C. This is a hedging through hedging with swap contracts. Then netting and offsetting we have already discussed. Netting क्या होता है? With a table जहाँ पर हमने देखा था US डॉलर कैनेडियन डॉलर्स का हमने टेबल किया था नेटिंग एंड ऑफशोरिंग, इसलिए we are I'm skipping that due to paucity of time. Again I cannot repeat. Then we have currency of invoicing. Importers and exporters can also shift foreign exchange exposure by getting their exports on imports invoiced on their current currency. So currency of invoicing एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है हेजिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को एलिमिनेट तो नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे पार्टी पर शिफ्ट करता है. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म का इनवॉइस है, इफ अ फर्म इनवॉइसेस इट्स इंपोर्ट्स इन इट्स डोमेस्टिक करेंसी, इट need not face foreign exchange exposure on its payables, but in counterparty, the counterparty, that is the exporter, will face the foreign exchange exposure. तो ये क्या कर रही है कि अगर अपने करेंसी में वो इंपोर्ट करवा रही है अपनी डोमेस्टिक करेंसी में, सो उसको फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर नहीं फेस करना पड़ रहा है, इंस्टेड किसको फेस करना पड़ रहा है? एक्सपोर्टर को फेस करना पड़ रहा है. सो दिस इज अ करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग. दिस इज another method you can apply for mitigating the transaction risk. ये हमारा टेक्निक है, दैट इज करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग. ये उन करेंसीज पर एप्लीकेबल है जो तो थोड़ा सा इन वोलेटाइल है, जो कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है. तो उस केस में आप करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं. Even in this in your currency of invoicing, जैसे एक इंडियन एक्सपोर्टर है, एक जापानीज इंपोर्टर है, तो वो दोनों इस पर डिसाइड कर सकते हैं, इस पर अग्री कर सकते हैं पहले से, दैट यूएस डॉलर पर इनवॉइसिंग. Then we have leading and line strategy. So transaction exposure can also be managed by shifting the timing of receipt or payment of foreign currency in accordance with the expectations of future exchange rate movements. A firm may lag the receivables and lead the payables in hard currencies. So एक firm receivables को lag कर सकती है, payables को lead कर सकती है in hard currencies. So it may also lead the receivables and lag the payables denominated in weak currencies. So hard currencies में कर सकती है, weak currencies में कर सकती है. Suppose example लेते हैं. Leading and lagging technique, let's understand with the help of an example. क्या example है? Suppose एक Indian firm है जिसको 3 months payables, 3 months उसके पास payables है BR से, which are denominated in US dollars. ठीक है? Since you know, all of you know that US dollar is a strong currency and it expected to appreciate against Indian rupee, any delay in settlement of US dollar payables will put additional burden on the Indian firm. ठीक है? अगर डिले हो रहा है पेमेंट में, तो फिर इंडियन फर्म पर ही वो बर्डन आएगा, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो वो अप्रिशिएट होता रहेगा. सो द फर्म मे सेटल द पेमेंट इमीडिएटली एंड अवेल द कैश डिस्काउंट इफ एनी. तो अगर इमीडिएटली पेमेंट करे और कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर वो इस तरीके से अवेल कर सकते हैं. सिमिलरली अगर किसी फर्म के पास रिसीवेबल्स है वीक करेंसी का, जैसे हंगरी करेंसी हो गया, अगर इस टाइप का उस करेंसी में अगर उसके पास रिसीवेबल्स है, तो वो बहुत जल्दी डिप्रिशिएट हो सकता है. तो अगर आप डिले करेंगे, तो वो आपके रिसीवेबल्स के अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, राइट? सो दैट कैन बी एन एडवांटेज फॉर यू. So if a firm has certain debt obligations in weak currency, it may lag the payment. तो पेमेंट को वो डिले कर सकता है, अगर वीक करेंसी में है तो डिले कर सकता है, और अगर डेट ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग करेंसी में है तो वो एडवांस पेमेंट कर सकता है. So the neglecting to do so may lead to an increase in debt burden with the appreciation of the strong currency, which is likely the event.
So again, I'm repeating. Let's have a recap of what we have done. Managing transaction exposure, how we can manage the transaction exposure. दो तरीके से हम hedging technique through forwards and futures, money market hedge, swaps and options. Then operational techniques में आपका आता है netting and offsetting, that is आपस में ही subsidiaries ने netting कर लिया है. Then currency of invoicing and then leading and lagging. Leading and lagging मतलब अगर आपके पास किसी weak currency का receivables है तो आप delay कर दीजिए payment, lag कर दीजिए. और अगर आपके पास किसी ऐसे कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग करेंसी का बिल्स पेबल है तो आप उसको लीड कर दीजिए, जल्दी से आप उसको पे कर दीजिए, एडवांस पेमेंट कर दीजिए, सो दैट आपके डेट बर्डन कम हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करेंसी अप्रिशिएट होगी और आपके लिए डेट बर्डन बढ़ता रहेगा, और वीक करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो आपके लिए डेट बर्डन कम होता रहेगा. सो इन दैट सिनेरियो, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी, यू हैव टू फॉलो द लीडिंग टेक्निक, और अगर वीक करेंसी है तो लैगिंग टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मिटिगेट द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. आई गेस दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Then moving to the next topic of this unit, we have done economic exposure, transaction, measurement of risk exposure, measurement of currency risk using currency forwards and futures. Now let's talk about the last 2 points, that is assessment of interest rate risk, how we can manage the interest rate risk using interest rate futures, swaps and other financial swaps. Yes. So how you can manage the interest rate risk? The first one is using the interest rate futures. So this is one of the most successful financial derivatives. And interest rate futures क्या है? ये basically standardized contract है, which are traded on exchange to buy or sell a debt security at a certain date in a future at a specified price determined today. Future में एक specified price पर, जो कि आज हमने determine किया, for a certain date, कहाँ पर ट्रेड होता है? एक्सचेंज पर, टू बाय एंड सेल ऑफ अ डेट इक्विटी, डेट सिक्योरिटी, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. सो बेसिकली इट कैन बी अ टीबी, दैट इज योर ट्रेजरी बिल्स, नोट्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा. So interest rate futures allow the buyers of the contract to lock in a future interest rate. आप फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर दे रहे हैं. जैसे हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किया, जहां पर हमने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लिया, यहाँ पर इंटरेस्ट को हम फिक्स कर सकते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट को हम फिक्स कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. So those who trade in interest rate futures do not usually take possession of financial instrument at the expiration of the future contract. If interest rates are higher than the rate specified in future contracts, the buyer of the future contract will pay the seller the difference between the market interest rate and interest rate specified in the contract. So जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, उसके डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट हायर है देन द रेट स्पेसिफाइड इन दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो बायर है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, दैट पर्सन हैज टू पे द सेलर द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Then we have an example of this interest rate futures. ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये टीबीज ट्रेजरी बिल्स पर भी हो सकता है, यूरो डॉलर्स पे भी हो सकता है. these are the examples of short term interest rate futures. And अगर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी नोट्स for long term securities है, तो then these are the examples of long term interest futures. So the price of interest rate future is stated on an index basis. Index basis पर होता है, क्योंकि already I have told you that ये जो interest rate futures है, these are traded on exchanges. So ये
इंडेक्स बेसिस पर स्टेटेड किया जाता है एंड द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 100. फ्यूचर इंटरेस्ट रेट सपोज 7% है या 3% है, उससे 100 में से माइनस करके हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर, हम उससे कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स. ठीक है. So suppose buying an interest rate futures contract on 3-month euro dollars at 96.5 means that buyer of the contract will get a euro dollar deposit in bank at an effective interest rate of 3.5% per annum. अगर आप एक bond purchase करें, euro dollar purchase करें 3 months of 96.5, it means that आप 3.5% interest effective interest rate दे रहे हैं per annum. So as the interest rate fluctuates, so does the price index. As the interest rate increases, the index moves lower. And the vice versa. तो यहाँ पर inverse relationship है between the interest rate and the index. अगर interest rate increase हो रहा है तो इसका मतलब index lower will move lower. ठीक है. और अगर interest rate decrease हो रहा है तो index moves in a upper direction. ठीक है. ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसका एक मिनिमम प्राइस मूवमेंट है दैट इज ऑन 1 basis point, that is 0.01, which corresponds to a change in contract value of the security. For example, अगर 1 tick है उसका worth है $25 for interest rate futures on euro dollars. ठीक है. और अगर 1 tick value for 0.005 तो half of 1 basis point होता है. Then we have a conversion. Then we have a conversion factor. Conversion factor, there are a large number of securities of same time. That is treasury bonds with different coupons and different time periods remaining for maturity. The seller of the future contract is allowed to deliver any security at the time of maturity of the futures contract. So conversion factors को आपको देखना पड़ेगा. Conversion factors को consider करना पड़ेगा when you are talking about your interest rate. So, for example, Chicago Board of Trade has prescribed that the seller of future contract can choose to deliver any bond with maturity over 15 years and not callable within 15 years, and the conversion factor for any deliverable bond is present value of all associated cash flows. So, अगर हम Chicago Board of Trade से prescribe करके हमने कोई future contracts लिया है, तो उसमें हमें as a buyer what amount we have to calculate for future contract to the seller is cash paid by the party with long position equals to quoted future price multiplied by conversion factor plus accrued interest. So अगर एक bond है जिसका face value 1000 rupees है, वो फ्यूचर एक्सचेंज में कोट किया गया है at 950 rupees. So इसका conversion factor कितना हो जाएगा 1.450 and accrued interest on bond at the time of delivery is 120 and cash received by seller on the bond, अगर short position की बात करें और long position की बात करें तो फिर कितना हो जाएगा 950 multiplied by 1.50, that is cash position in long position कितना हो जाएगा quoted future price. Quoted future price कितना है हमारा 950 quoted future price है multiply by what conversion factor. Conversion factor कितना दिया हुआ है 1.450 plus what is accrued interest. Accrued interest कितना दिया है? The accrued interest on the bond at the time of delivery is 120 rupees. So हम फिर calculate कर सकते हैं, that is your 1497.50 is the delivery price of the bond. I guess that is clear to all of you. Then we have your interest rate swaps. What is interest rate swap? It is an interest. It is basically a forward contract which one a stream of future interest payments is exchanged for another based on specified principal amount. एक ऐसा forward contract है जहाँ पर future interest payments को exchange किया जाता है on the basis of another specified principal amount. So interest rate swap is usually involves the exchange of fixed interest rates of a floating rate and vice versa to reduce the increased exposure of the fluctuations in interest rates. ये जो swap है ये floating rate पर भी हो सकता है जिसको हम basis swap बोल सकते हैं. Interest rate swaps basically आपका exchange of one set of cash flows for another हम इसको बोल सकते हैं.
Then there are different types of this interest rate swaps. That is your fixed to floating. That is your fixed to floating. फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक कंपनी है, उसने इशू किया एक बॉन्ड एट वेरी अट्रैक्टिव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टू इट्स इन्वेस्टर्स, एंड कंपनी ये मैनेजमेंट ये समझती है कि ये बेटर कैश फ्लो जनरेट कर सकता है फ्रॉम फ्लोटिंग रेट. ठीक है. सो इन दिस केस वो कंपनी क्या कर सकती है, वो कैन एंटर इनटू स्वैप with a counterparty bank in which company receives a fixed rate and pays a floating rate. ठीक है. एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है एक बैंक के साथ, काउंटर पार्टी बैंक के साथ, जहां पर वो फिक्स्ड रेट के हिसाब से वो रिसीव करेगी, लेकिन पे कितना करेगी, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से. ठीक है. सो दिस इज नोन एज स्वैप स्ट्रक्चर टू मैच द मैच्योरिटी एंड कैश फ्लो ऑफ द फिक्स्ड रेट बॉन्ड एंड द टू फिक्स्ड रेट पेमेंट स्ट्रीम्स आर नेटेड. आई गेस दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू कि आप एक बॉन्ड इशू कर रहे हैं जो फ्लोटिंग रेट पर है, लेकिन आपने एक बैंक के साथ काउंटर पार्टी बैंक के साथ आपने एक अग्रीमेंट कर दिया कि आप फिक्स रेट में मैं रिसीव करूंगा और आप मैं पे फ्लोटिंग रेट पे करूंगा. Then vice versa to this, that is your floating to fixed swap, where a company does not have access to fixed rate loan may borrow at a floating rate and enter into swap to achieve the fixed rate. तो यहाँ पर just reverse हो जाएगा कि उसके पास access नहीं है fixed rate loan के लिए, तो floating rate से उन्होंने borrow किया और उसको swap करवा दिया. Then float to float, companies sometimes enter into swap to change the type or tenure of the floating rate index that they pay. So float to float floating rate ही है, लेकिन उसके index या फिर उसका tenure, उसका type, उसको change करने के लिए float to float में change करते हैं. जैसे एक 3 months LIBOR था, उसको 6 months में convert किया. ठीक है. Then a plain vanilla swap, it is a standard contract without any unusual contract additions. कोई contract additions नहीं होता है. इसमें basically highly sensitive price rate, highly typically sensitive to high interest rate changes and seeks to reduce the interest rate risks. So interest rate risk के typically उससे sensitive होता है. Other type of interest rate swaps आपके accretion swap है, in which notional value is increased over time. उसका जो notional value है, material value है, that is being increased over time. Then there is amortizing swap, जहाँ पर which is totally opposite of accretion swap, जहाँ पर notional value reduce होता रहता है. Accretion swap में notional value increase होता है, amortization you know that depreciate होना, तो वो reduce होता रहता है. Then floating basis floating for floating swap, इसमें क्या होता है, it involves exchange of two floating rate payments. For example, once a swap between 1 year LIBOR and 6 month LIBOR is a basis swap. तो just floating to floating में basic swap हो रहा है, just month के basis पर और tenure के basis पर उसको change किया जा रहा है. That is a basis floating for floating swap. Then we have your callable swap. Callable swap जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक fixed rate पे करना पड़ेगा when there is a termination of the swap. So fixed rate payer would exercise this right if interest rates fall substantially. अगर interest rate substantially गिर रहा है तो the fixed rate payer would exercise this right. Then we have your forward swap, जहाँ पर आप पहले से अभी से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होगा. देन पुटेबल स्वैप, जहाँ पर आप फ्लोटिंग गिव्स the floating rate payer the right to terminate the swap. आपके पास right है कि आप कभी भी अपने swap को terminate कर सकते हैं. Then zero coupon swap, जहाँ पर all fixed interest rate payments are postponed until maturity and paid in a lump sum when the swap matures, and then swampation, which gives an owner the right to enter into a swap. Then we have your international diversification and portfolio investment, that is your unit 5. There are various challenges, opportunities we come through when we are talking about international diversifications. Basically, portfolio diversification, that is you are putting the
doing the investment in different portfolios. That can be in equity, that can be in debt, that can be in bonds, that can be in money market. So you are using different kinds of portfolios in which you are diversifying your investments. So international diversification results in risk reduction for a given return of an asset when the correlation coefficient between domestic market and foreign market is very low. So the lower the correlation coefficient, the higher is the risk reduction. So now lower होगा correlation coefficient, उतना आपका risk reduction higher होगा. ठीक है. So for example, अगर हम example देखें तो एक जापानीज और यूएस मार्केट्स की बात करते हैं, वो दोनों ही highly positively correlated है. ठीक है. So अगर कोई इन्वेस्टर है, यूएस इन्वेस्टर्स है, उसकी पोर्टफोलियो है यूएस स्टॉक्स में, तो it will not experience significant diversification benefit by investing in Japanese stock, क्योंकि दोनों के यूएस मार्केट और जापानीज मार्केट हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, तो इसलिए कोई एज सच बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा अगर वो जापानीज स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहा है. लेकिन अगर यहीं पर दो ऐसी मार्केट्स है, ऐसी मार्केट्स है जो दो ऐसी कंट्री के मार्केट्स है जो उतने पॉजिटिवली कोरिलेटेड नहीं है, तो प्राइस ऑफ असेट्स ऑफ वन मार्केट में गो अप एंड डाउन, एंड एज अ रिजल्ट आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो, तो एक का अगर रिस्क उसमें है तो दूसरे से आप उसको मिटिगेट कर सकते हो. ठीक है. सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन. There is also comes with the cons, that limitations of international diversification. So correlation between stock indices have been higher in recent years than they have several years ago. The general increase in correlations among stock markets returns may have implications for MNCs that attempt to diversify internationally. So one of the increased reason for increased correlation among stock market returns is increased integration between countries. ठीक है. So इतना ज्यादा इंटीग्रेशन हो गया आजकल, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है. इन द मॉर्निंग क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. देयर इज नो बाउंड्रीलेस इकोनॉमी. सो हर कंट्री इंटीग्रेटेड है. सो हम हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड कंट्रीज हम बहुत रेयरली हमें मिलता है. सो द कन्वर्जन्स एंड हाउ वी कैन मिटिगेट दैट, we can take the advantage, we can reap that advantage, that is much difficult nowadays. Then let's move to the syllabus part. Then we have in the 5th unit portfolio investment, global markets for equities, international diversification. So what is portfolio investment? Portfolio investments represents the transactions involving long-term financial assets between countries that do not affect the transfer of control. So financial assets like stocks, bonds, your debentures, mutual funds, इन सारी में आप कितने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स के ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें बिटवीन द कंट्रीज, सो दैट इज कमिंग अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. Suppose Indian purchasing of stock in US market of a US company, that is coming under the portfolio investment, international portfolio investment. What are the factors that affect international portfolio investment? Obviously, the tax rates on dividends and interest. So, agar बहुत high taxes on interest and dividend income for the investments, then that is not preferable. Agar low hai, then obviously it is preferable. Okay. Then investors assess their potential after tax earnings from investment in foreign securities. Then we have another point, that is interest rates. Agar high interest rates have that can be as long as the local currency are not expected to weaken, then that can impact the portfolio investment. Then we have foreign exchange rates. When investors invest in security in foreign country, their return is affected by number one, the change in value of security. कि अगर मैं एक foreign country में invest कर रही हूँ, उनके portfolio में invest कर रही हूँ, तो return किस चीज से expect किया जा सकता है, affect होता है. number one, कि जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रहा है, और सेकेंडली वैल्यू ऑफ करेंसी किस सिक्योरिटी में वो डिनोमिनेटेड है. ठीक है. So अगर suppose if a country's home country is expected to strengthen, foreign investors may be willing to invest in the country's securities to benefit from the currency movement. अगर हमें लग रहा है कि कोई एक developing country high उसकी GDP growth हो रही है, so in that country if we are putting the investing in their portfolio, that can have give a good currency movement. Right. So now next move to the Markowitz portfolio model.
Markowitz has developed this portfolio model in 1950s. Basically, he was the first one who formally attempted to measure the risk of a portfolio, how we can calculate the alpha, beta, and develop a procedure of determining the best portfolio. कि हम इतने सारे options इतने सारे portfolios तो उसमें से best कौन सा होगा? Risk and return का जो not actually risk and return, expected risk and return का जो trade off है वो किस तरीके से analyze कर सकते हैं, that can be done with the model given by Henry Markowitz. So Markowitz derived a formula for computing the variance of portfolio. To build the basic model, there are certain assumptions. Kuch assumptions are there. What is the formula for return on individual investment? कितना return आप expect कर सकते हैं, rate of return on individual investment, that is calculated by RI multiplied by PI, where I that is outcome of I multiplied by probability of occurrence of I. कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है, वो ये जो रिटर्न है आ सकता है, और कितना आउटकम है उसको मल्टीप्लाई करने से वी गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ सिक्योरिटी और असेट. Example is there. Suppose there is an investor who holds a security for 1 year, and the probability distribution of possible returns of investment is given here. Calculate the expected rate of return on the investment. So probability of occurrence क्या है? 0.04 है, तो probability rate of return है 0.10. As we see in the formula, as we can see in the formula that R is equal to I minus PI. That is, अगर हम यहाँ देखें तो R क्या है हमारा 0.4, R है हमारा 0.10, that is possible rate of return multiply by हमारा probability of occurrence. Probability of occurrence क्या है हमारा 0.04. So this multiply by this plus this multiply by this plus third possible rate of return multiply by third probability of occurrence. इस तरीके से अगर हम जब summation करेंगे, we will get the expected return on investment, that is your 0.14, that is your 14%. Okay, so this is how we can calculate the return on individual investment. Similarly, we have to analyze the risk of individual investment, and for that we use the standard deviation of returns, a measure of risk of investment. So that is your the standard deviation is equals to under root of summation of Ri minus R bar to the to whole square multiplied by Pi. So using the data जो ऊपर दिया हुआ है, तो हम standard deviations निकाल सकते हैं. 0.10 minus 0.14 multiplied by 20.04. Which results to 0.04%. ठीक है? So portfolio return ये था इंडिविजुअल पोर्टफोलियो रिस्क ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट. नाउ अब हम बात करते हैं टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है. पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ समेशन xi मल्टीप्लाई बाय ri, where xi is the proportion of total portfolio invested in security in asset upon security I divided by your expected return on asset upon security I. इसका समेशन. ठीक है, where n is your number of assets or securities in that portfolio and RP is your expected return on portfolio. For examples देखते हैं. A portfolio consists of 3 securities XYZ with returns of 10%, 15%, 20% respectively. The proportion of portfolio value invested in these securities are 0.3, 0.5 and 0.2 respectively. So expected return on portfolio क्या है? RP equals to क्या था हमारा? RP equals to your summation of xi multiplied by ri. Xi was your proportion of total portfolio invested. Total portfolio investment क्या है हमारा? 0.3 multiplied by 0.10, 10% expected return, right? Plus 0.5 multiplied by 15%, that is 0.15. Then 0.220 multiplied by expected return 0.2. That amounts to 14.5%. Similarly, we will calculate the portfolio risk, that is your proportion of under root of proportion of total portfolio value invested in security I multiplied by proportion of total portfolio value invested in security J and covariance between returns of securities I and J. Right. So here is a question.
The portfolio consists of two securities, A and B, in proportions of 0.3 and 0.7. The standard deviations of returns of these two securities are 15 and 25 respectively. The correlation coefficient between returns of two securities is 0.4. So using the formula, you have to calculate the standard deviation of portfolio return. So what the was the point that you have to understand the proportion 0.3 square multiply by 0.15 square, that is your standard deviation of return ka square, plus 0.7 square multiply by 0.25, that is your standard deviation of returns, plus 2 times of the correlation between the two securities. Okay, so 2 times of 0.3 into 0.7 into 0.4 into 0.5 into 0.04, right? Multiply by 0.15 multiply by 0.25. So this amounts to your 1.1974. You can see the formula here also. यही formula था हमारा. That is your proportion of total portfolio value invested in security I multiply by total proportion of total portfolio value invested in security J multiply by your covariance between returns for security I and J in सबका summation. Then similarly J Now coming to the topic of optimal portfolio. So according to Markowitz's mean variance maxim, the investor should select a portfolio of securities that lie on the efficient frontier. Although all the portfolios on efficient frontiers are efficient, they are not equally desirable for an investors. There is only one portfolio on the efficient frontier that can satisfy the risk return preference. So एक ही frontier होता है जो कि आपके expected return and risk को आपका satisfy कर सकता है. ठीक है? So the risk return preferences of investor are represented by a set of indifference curves. You can see here there are 4 indifference curves, Li, L2, L3, and L4. So this indifference curves, what they are showing the risk return preferences of an investors. So the rates of return of an indifference curve increases with risk. जितना उसका return होगा उसका risk के साथ उसका return भी increase होता रहेगा. ठीक है? So an investor is indifferent to any combination of expected risk and return on a particular indifference curve. तो किसी भी particular indifference curve में एक कोई भी investor किसी भी particular indifference curve में वो indifferent नहीं है. ठीक है? So in other words, we can say that these indifference curve, these L1, L2, L3, and L4 represents combination of expected return and risk. So expected return in इसको अगर हम combine कर दे तो we can analyze the what our investor is expecting return and risk with the same level of expected utility. ठीक है? जितना steeper होगा slope of indifference curve उतना ही greater होगा risk aversion of that investor. मतलब वो उतना ही risk taking capacity होगी. जितनी steeper होगा slope of indifference curve उतना ही investor की risk taking capacity more होगी. And vice versa. When there is a set of indifferences curve, each successive curve towards left represents a higher level of expected utility. So given the efficient frontier and the risk return indifference curve, an investor can find an optimum portfolio. So this is actually the optimum portfolio. This is the opportunity set you can see in the diagram. In the y-axis, there is expected return, and in the x-axis, there is expected risk. These are the 4 indifference terms, L1, L2, L3, and L4. And this is the opportunity set. So where this L2 is touching the opportunity set, this is the highest level of utility an investor can reach. So is this point touches the efficient frontier, and this is the optimal level. I guess that is clear to all of you. This is the optimal portfolio where the opportunity set touches the indifferences curve. Now, last topic of today's class, that is your CAPM, Capital Asset Pricing Model. Okay.
What is this capital asset pricing model? This is basically a model which is based on the Markowitz model, जो William F. Sharp and John Linton ने develop किया था, जो कि बाद में well known as capital asset pricing model. ये मॉडल क्या करता है, कंसिडर करता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न फॉर एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो. एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना उससे रिटर्न मिलेगा. दैट काइंड ऑफ थिंग इज बीइंग अंडरस्टैंड बाय दिस CAPM मॉडल. So it is simple model and many real world applications. So CAPM considers the relationship between risk and return for an efficient portfolio and relationship between risk and return for an individual security and assets. Assumptions क्या लेता है कि जो investors है वो rational है, risk averse है. Investors can borrow and lend any amount of money at risk-free rate of return, which is known as RF. इन्वेस्टर्स होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है, सब सेम ही है. ऑल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स आर इनडिफिनाइटली डिविजिबल, सब डिविजिबल हो सकता है. ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो डिविजिबल नहीं हो सकता. हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है इन बाइंग और सेलिंग असेट्स. एंड कैपिटल मार्केट्स जो है वो इक्विलिब्रियम है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. So what this CAPM is basically telling us this formula is giving, that is RP equals to XRM plus 1 minus X to multiply by risk-free rate, and where sigma P is your XM. Okay? So where X is proportion of total portfolio value invested in market portfolio M. 1 minus X is basically the proportion of total portfolio value invested in risk-free asset. RM is expected return on market portfolio and RF is a risk-free return. Let's do an example. If borrowing funds at risk-free rate is allowed in order to increase the, अगर एक investor है वो risk-free rate पर fund borrow कर रहा है rather than lending, then it will give this kind of equation, that is RP equals to XRM plus XI minus multiply by RF. Okay. This also creates this CML, that is capital market line. And CML is expressed in this formula, that is RP equals to risk-free rate plus RM minus RF upon sigma M multiply by mu P, sigma P. So the first term on the right side, RF is the price of the time, and the second term is basically the market price of the risk multiplied by the portfolio risk. So efficient portfolios वही हो सकता है जहां पर आपका नॉन सिस्टमैटिक रिस्क जीरो है. ठीक है. अगर हम इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि the only risk present in efficient portfolio is the systematic risk, which is denoted by beta. एक systematic risk है, that is beta, and जो CML है, that is basically represents the linear relationship between risk and return of efficient portfolios, including market portfolios. Then we have SLM, which is devoted by the formula, that is RJ equals to RF plus RM minus RF to the power multiply by beta J, where RJ is risk-free rate of return plus RM expected overall return for market portfolio minus risk-free rate multiplied by beta coefficient of security J. So this is a security market line where this line shows the risk premium. This gap shows the risk premium, and this is a risk-free return. In the x-axis we have your systematic risk beta, and in y-axis we have your systematic return RF. Systematic expected return, and RF is the your risk-free rate. And this line, the slope is showing the security line market. Security market line. So international capital CAPM, you have to understand that this is an international CML line, and this is a CML domestic.
And this is this indifference curve. This one and this one is showing the international portfolio efficient frontier, and this indifference curve is showing domestic portfolio efficient frontier. So from this M to this M, this is basically the risk reduction of market portfolio. So this is what is international CML. Okay, then that's all for the revision class. We have covered every part of the syllabus of unit 5 as well. Any doubts you have, you can write in the chat box. Chat is no. Okay, kindly raise your hands if you want to have any query, any doubt. Yes, Kanika, you can unmute yourself. मैम जो आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का फॉर्मूला बताया था वेरिएंस वाला उसमें B2 * वेरिएंस था ना क्योंकि Yes, मैम आपने बोला बीटा इंटू वेरिएंस और जो इसमें लिखा हुआ था वो बीटा *2 वेरिएंस लिखा हुआ था हाँ, that रीडिंग is beta into 2. हाँ, वो नीचे सब सेट में नहीं था, that is beta multiply by 2 था. ठीक है. तो मैम 2 है ना इसमें? हाँ 2 है, वो 2 ही है. बीटा सबसेट में 2 नहीं है, by 2 है वो. That is why we are doing the twice of that. ठीक है. ओके मैम. और मैम आप ग्लोबलाइजेशन वाली पीपीटी शेयर करोगे? हाँ, मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में. ओके मैम, थैंक यू. Welcome. Yes, another doubt. Unverified. Please tell your name first. I have allowed you. Unmute yourself. Are you there? Unverified. Okay. That's all for today. All the best for your exams. I hope you got a quick revision of your whole international financial management. I will share the PPT in the group. Thank you. All the best.